Very warm welcome back to Rawalpindi Cricket Stadium, and it's match number 12 of Barrier Town Champions Cup T20. Nurpur Lions will be taking on UMT Markhors. Well, it's the second of the doubleheader. Earlier on, Lake City Panthers put up 168 for 7 thanks to a brilliant knock of 73 from Haider Ali, contributions from Mubassir and Umar as well. Muhammad Ali with 4 for 28 was amongst the wickets. Allied Bank Stallions, who were cruising at one stage, took the game into the final over as they went over the line with 2 deliveries to go. Haris once again starring with the bat, 61 the half century for the skipper. It's getting very tight at the top. Remember, one team will go directly into the final and 2 underneath will go for a qualifier. Allied Bank Stallions sitting pretty at the top with a decent net run rate as well. UMT Markhors will have a chance to join them at the top or better them on run rate. It's plenty of entertainment in the first game. It's Sunday afternoon. It's a bit murky in Rawalpindi, but there is a very good crowd settling in, having an afternoon munch. Nicely wrapped up, all these crowd, because it's pretty cold. Pitch was very good for the first game. Let's see if we can notice any changes for this second game. A bit of scuffing of the bowlers' foot marks, but generally the surface itself has been pretty decent. It got quite good towards the back end of the Allied Bank Stallions innings rather, and it promises to be a very good pitch even now. Well, our colleague Marina Iqbal was with both the captains in the middle just a short while ago for the coin toss. Conditions are overcast and chilly, but we're all set for a thrilling encounter between UMT Markhors and Nurpur Lions. I've got the captains with me, Imamul Haq for Nurpur Lions, and Iftikhar Ahmed will be leading UMT Markhors, and we have Iqbal Sheikh as our match referee. Imam, go for the flip. Head. Heads is the call. And tails it is. Imam, क्या करेंगे और क्यों? We're gonna have bat first. Conditions थोड़ी सी overcast हैं, तो ये एक tactical decision है या देखा है कि डिफेंड हो रहा है यहाँ पे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंड हो रहे हैं, हमारी बॉलिंग अच्छी है, हम कोशिश करते हैं कि अच्छे डिसेंट रन्स ऑन द बोर्ड लगाएं और उसके बाद जो है ऑपोजिशन को जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी कोई बहुत ज़्यादा बैटिंग पैराडाइज नहीं है. अगर आपकी अच्छी डिसेंट बॉलिंग है, अच्छी आप लेंस हिट करते हैं तो इतनी आसानी से हिट लग नहीं रही. बैटिंग की आपने बात की, ओपनर सेट हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, ये कंसर्न है? हम चाहते हैं मिडिल ऑर्डर्स ना ही टेस्ट हो तो अच्छा है, बट द थिंग इज, देखें अब ओपनिंग अच्छी चल रही है, इसलिए आप ये कह सकते हैं टेस्ट नहीं है क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही. तो आई विश, हमने कोशिश की है कि अगर जितना जब उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो वो परफॉर्म करें, और हम यही कोशिश कर सकते हैं. बट जो चीज़ अच्छी चल रही है, हमारी कोशिश होगी कि हम उसको और अच्छा बेहतर कर सकें. और क्या टोटल देख रहे हैं सरफेस पे? ऑब्वियसली देखें, नाइट का मैच है तो थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि 180 तक हम इसको लेके जाएं और उसके आगे जो भी है एसेस करें कंडीशंस. अगर और अच्छा विकेट है, क्योंकि इधर थोड़ा सा हमें ये इशू हो रहा है कि हर रोज़ डिफरेंट विकेट खेल रहा है, तो अगर अंदर जाके आपको एसेस करके लगता है कि ये 190 प्लस है तो ऑब्वियसली हम विल गो फॉर दैट. कोई चेंजेस आपकी साइड में? वन चेंज है, शरून की जगह जुनेद आए. चलें, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू. थैंक यू. इफ्तिखार बॉलिंग कर रहे हैं, हैप्पी विद द डिसीजन? हाँ, हमने टॉस जीत के भी हमने बॉलिंग करनी थी और ये अच्छा हुआ कि वो लोग खुद बैटिंग कर रहे हैं. थोड़ा सा बैटिंग की बात करें, स्ट्रगल होता नज़र आया पिछले मैच में भी, उससे पहले भी, तो क्या फिक्सेस आपके लिए हैं उसमें? बिल्कुल, हमने थोड़ा स्ट्रगल किया है बैटिंग में, और हमारे मीटिंग में यही बात हो रही कि इस जैसे विकेटों पे आपने पार्टनरशिप लगाना है, तो यही बात हुई. इंशाल्लाह आज देखेंगे थोड़ा पार्टनरशिप लगाते, जहाँ इस ऐसे विकेटों पे आप जितना टाइम लेते हो तो आपके लिए फिर बाद में ईजी हो जाता है. और कोई चेंजेस आपकी साइड में? 2 चेंजेस है. बिलावल भट्टी इन है इमरान जूनियर की जगह, और फैज़ान इन है शहजाद की जगह. चलें, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू. थैंक यू. The news from the center is that Nurpur Lions have won the toss and they have opted to bat first. Nurpur Lions will become the first team who won the toss and elected to bat first. Imamul Haq. Iftikhar wanted to bowl as well, so both the captains got what they wanted actually, and that is very interesting to note. We'll get in
Pakistan's former skipper Salman Butt, who's alongside me, and we'll have a quick look at the teams. Welcome along, Salman. Thank you, Shaji. And Nurpur Lions have a stable lineup. Just the one change that they have, Junaid comes in. He's a fast bowler, and I believe he's a left armer. So this was something which was missing in this side. Rest of the side remains the same as the top order, who've been getting good starts, Imam, Hassan. And in this side, I think they have one very good change. Faizan comes in. He's a very, very handy player and a person who has a lot of strokes up his sleeve. The rest remains the same. First time that UMT Markhors have made any changes to their playing 11. Faizan for Shehzad and Bilawal Bhatti coming in for Imran Jr. Teams have made it to the middle. Both the umpires and Imam ul Haq, who's been in very good form in this tournament. That average of 33, and the strike rate is always on the up, 123, just 28 years of age. Imam ul Haq, no hundreds for him in this format just yet. Prolific in 50-over cricket in terms of hundreds. But this man on your screens have been a revelation. His stroke play and his stroke making has been terrific in this tournament. Very young, 22 years of age. Tall, imposing figure. Very, very talented youngster. Akif to start off with a slip, and 4 men in the ring on the offside. And on the leg side, there's a square leg, which is a bit closer to the mid-wicket position. As Imam ul Haq prepares to take on Akif, and the umpire calls it play. Interesting contest. Faisal Afridi calls everything is ready to play. Cracking stroke. Wow. Picked up the length so quickly and smashed it away. Imam ul Haq off the mark in a spectacular fashion. A very dismissive start this by Imam ul Haq. Just picking Akif off length and just placing it through mid-wicket and mid-on. Great shot. And he seems like he's been batting outside the ropes. Has come in watching the ball like a football. More heat on it, but wayward. No chance for Khwaja Nafe. And this is a rollicking start already for Nurpur Lions. A bit of at times the bowlers can get double-minded while they reach the position of release. If they're not decided, then this is what happens. Looking to bowl short and also wanting to bring the ball back in, and in the end bowling a wide, which is a very wide one. This one is on target as Imam plays it with soft hands for a single. Indifferent start for Akif. That first delivery was really a nothing delivery. Just put it on a length. And Imam, who's quick, trusting the bounce, put him away. Second delivery, Akif realized the need to put more heat on it, but then lost it completely. Third time lucky. But now he's got a right-hander to contend with in the form of Hassan Nawaz, who's really been impressive in this tournament. Got a half century, but he got starts in every game and he looked at ease against the pacey and bouncy ball. This will be a good contest. Akif warming up to the task. Wow, what a stroke. Don't bother chasing those here at the Pindi Stadium. This is a classic straight drive. No matter which format you're watching, whenever you see a straight drive, it's so pleasant, so pleasing to the eye. And Hassan Nawaz, he's been brilliant with the short ball, and now playing this fuller ball to perfection. Full face of the bat and well timed. So Nurpur Lions are off to a flyer. 14 of just the 3 deliveries
of the first over. A bit of a concern for the UMT Markhors. They wanted to bowl first, Shaji. That's what Iftikhar said at the toss, and Akif has gone round the wicket. Wide of the crease, nicely riding the bounce was Hassan Nawaz. It's very interesting. In all games, we've seen Akif Javed go around the wicket very quickly. He's done that and he's been successful. If you remember, he dismissed Yasser around the wicket, a ball that came in with the angle and just straightened up. It was a classic dismissal. And Hassan Nawaz, well, he's done pretty well. He played this delivery on top of the bounce. And this is a great hit. Down the ground, picking his length and just hitting it straight back to the bowler. And who seemed to have no chance of stopping that. He read the plot very well, Hassan Nawaz. He was expecting Akif to cramp him. Look at that front foot, opened up and flat bats him. It's never been a problem from him to get over the bounce. His hands pretty high, and a terrific smash once again. Hassan Nawaz, talking about his tournament, he's just got 150, but he's got starts in every game. Another neat looking flake. One bounce to the fielder. We'll have to wait and see. I think the fielder did get a knock in. The ball bounced right in front of him. First over done, a very expensive one. Nurpur Lions 19 for none. On a gloomy day, the lights have been turned on, probably earlier than normal. But we'll not be complaining because it's going to be spectacular when these lights take a full effect. Iftikhar Ahmed, the skipper, decided to bowl. And the wicketkeeper, I think, Khwaja Nafib, wants his helmet. Probably he wasn't ready for this ploy, let alone the batters. It's Sunday afternoon here. We had the best crowd of the tournament so far, and they watched a very entertaining game, the first one. It's cold, you can see plenty of jackets, warm hats, caps, the hoodies, good sprinkling of youngsters as well, both boys and girls. Very nice to see. Iftikhar deciding to attack from the other end by himself. Very nearly the edge could have been found. Hassan going on the back foot. It will be interesting, Shaji, how Hassan plays Iftikhar, because he has long levers, a big range, and with the ball coming straight on, mid-off up in the circle, there's a chance that could be taken by the batter. Iftikhar couldn't prevent the single. Yeah, the angle that Iftikhar chose around the wicket to the right-hander. Probably he's looking to slide the ball away from him and tempt him to hit over mid-off. It'll be different though for Imam. We'll have to wait when Hassan comes back on strike. But Imam, long off his back, and there is a deep mid-wicket, so no protection in the deep on the offside. Mid-on is up. Will Imam be tempted to go against the spin? Oh, that's an edge. But Imam will take the boundary. The runs continue to flow in these first couple of overs. Come on, boys. Was width on offer, and Imam didn't get it where he wanted, but he'd take the result.
back onto his good areas. Iftikhar, Imam picked him off for another run. It's 25 and we are still inside the second over. Just 10 balls into the innings. Great start for Nurpur Lions. Yeah, well timed once again. He is looking to go over the mid-off that is in the circle. He was trying to create room. Tahar very cleverly dragged it a bit short. Hassan has his eyes over there as the umpire just checks the ball once again. Maybe there's some leather coming off it. Hasn't taken much of a beating just yet, but still a loose thread probably coming out of the seam that was taken out around the wicket. Iftikhar creating that angle and getting a little bit of turn as well into Hassan Nawaz. Good finish to the over from Iftikhar. 2 done. Nurpur Lions 26 for none. Nisar coming in the attack to bowl the third over. So rapid changes for the UMT Markhors side as both the openers look solid and look progressive. And progressive has been their performance in this tournament. If you have a look at Imam, 13, 43, 45, 65. So he's progressed every game. And if this continues, we are in for a big partnership because the other man, Hassan Nawaz, also has been progressing. 22 in his first game, 30 in the second, 44 and 50. So both have grown in terms of runs, confidence, and the partnerships have become bigger. And that is why Nurpur Lions is winning games. They've been resurgent in the last couple of games. They have won that. They would love to continue the winning streak. Like I said, direct qualification for the final should be the first aim for all the 4 teams. Well, this is one of those days for UMT Markhors. The generally very reliable Nisar starts off with a wide. Yes, and the body language is also not very inspiring today from the UMT Markhors team. It's very quiet in the circle. Normally they are very chirpy. They make lots of noise. They seem to enjoy the battle, but at the moment it's all very quiet. And he must be a happy man. Makkar bhai, sitting along with the other sports staff. Slip has disappeared. The wide-ish delivery. Imam didn't quite time it. What could be the reason, Salman? UMT Markhors generally a very professional outfit. They work meticulously on their preparations, their pre-game routines. They've started cold here. Yeah, and add to that that they wanted to bowl first. So having said that and got what they wanted, the response they would have liked would have been picking up early wickets. But on the contrary, it's 29 for none and we have just started the third over. This one is banged in and just comes back off the surface. Well played in the end by Hassan Nawaz. Nisar also has bowled well in this tournament. He's been economical and he has picked up wickets, done well with the bat. 2 for 21 is in his first game, 1 for 17 in the second and 3 for 23 in the third. No wicket for him in the last game that he played, which was the fourth one. But generally, he has been on target as he prepares to bowl the third delivery of his first over. And Hassan goes big. It's huge. And it's, I think it has hit on the full, the mid-wicket boundary. The umpires definitely would need to check that, whether it's 4
or a 6. I think he didn't hit it cleanly. Normally he hits, the ball goes out of the park. It'll be interesting to see if it landed directly or it just bounced a little bit in front. Well, it's going and it's on the full. Probably almost on the top of the Toblerone. So it will be the 6 signal from Faisal Afridi, who's still waiting for the official confirmation. Hassan Nawaz, like Salman said, generally hits them far. Probably scuffed it a little bit. We'll have a chance to have a look at that. But it has hit the skirtings on the full. Pretty conclusive. Yeah, sometimes you wonder what the confusion is. And there comes the decision. Finally, the 6 signaled. Shaji, you always remind me of things to eat. You just named the boundary rope Toblerone. Placed away. And at the moment, dining is Hassan Nawaz. Some loose stuff being dished out to him. And he is having some fun. Top of the bounce again, well controlled, well placed. And Hassan Nawaz is getting better game after game. You look at him and you say the boy is starting to progress. He's got things under control. And this one was played wonderfully well. Great use, just lifting himself up on the toes, onto the top of the bounce. And this one is flicked. And Nafe, well, not a convincing job from him. It was in his range to stop, but he was unable to do so. Another boundary. So runs coming thick and fast. It's raining boundaries here. I don't know what to say about this. Nisar conceding the second wide, this time wide enough for Nafe. Have to wait and see. Nafe, just a small little stride, not much of a footwork, and just parries it away. That should go on the score sheet for Nafe as well. Probably a genuine wicketkeeper would have been able to come across and save that. Once again, Hassan Nawaz looks very comfortable against the bouncing ball. A rarity if you are an Asian, and this is very good to see. And is also a very risky flick of the last delivery. So Imam back on strike, 11 of 5. On the other end, Hassan, 22 of 12. And then the extras also. There have been 12 wides so far in this innings, and we are only in the 3rd over. Change of pace, chance. Imam gets in comfortably. And a rollicking start for Nurpur Lions. They are 46 after 3. Plenty of clouds today in the sky and a few kites. That's been a tradition of Rawalpindi. No rain, no imminent chance of rain at least. And with the lights on, definitely bad light is not an option. Plenty of color in the crowd as well. Shot asking for trouble and smashed by Imamul Haq. What a start. 50 has been brought up for Nurpur Lions. Probably the fastest 50 of the tournament. As a pair, as opening pair, 50 runs. It's 3.1 overs. So a team 50 comes up in 19 legitimate deliveries. And I still wonder why Iftikhar has the ball in the hand. And the Nurpur Lions keep taking the advantage. Once again shot. And this time there was another boundary for the taking, but Imam missing this.
No protection in the deep on the offside. He only had to get through the infield. Imam is looking to hit it too hard, I guess. This time. Running hard. No, good ground coverage. A couple of fielders converged quickly on it. Look at this tactic of Nisar bowling the 1 over, Akif bowling the 1 over. And Iftikhar deciding to come on himself. This is, like you rightly said, the fastest 50 of the tournament. Once again, Hassan Nawaz looking very comfortable against spin as well. This is the 6, drops it short, and Imam rocks back and hits it flat over mid-wicket. This certainly has been a top start from the Nurpur Lions and a chance for this pair to make it the best power play of the tournament, as this one has been driven down the ground for an easy single. Back up, back up. Well, these two openers, like we just mentioned a while ago, has grown in stature, grown in confidence as an opening pair. 2 is the call. Running very hard is Hassan Nawaz. Probably won't come back. Just a single. The good start for Nurpur Lion continues. 56 for none after 4. इससे बेहतर आगाज नूरपुर लायंस की टीम को नहीं मिल सकता था। पहली गेंद पर इमामुल हक ने चौका लगाया और हसन नवाज ने आज भी वही किया है जो पिछले एक हफ्ते से करते चले आ रहे हैं। तो ये टूर्नामेंट की सबसे कामयाब ओपनिंग पार्टनरशिप नज़र आती है। तमाम टीमों में से ही इन दोनों ने मिलकर अपना लोहा मनवाया है। मोहम्मद नवाज अब इसे तोड़ने के लिए कोशिश होंगे। ये मीडिया सेंटर एंड से बॉलिंग करने के लिए आएंगे। अच्छी बॉलिंग करते रहे नवाज यहाँ आने के बाद, लेकिन एक ख़तरा मोल लिया गया है पावर प्ले में उनके साथ आने का। पेस बॉलर्स पर ज़्यादा चारा चला नहीं है इफ्तिखार अहमद का। मरीना इकबाल कमेंट्री बॉक्स में है, खुश आमदीद। शुक्रिया तारिक भाई। बिल्कुल दोनों बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, हसन नवाज, इमामुल हक। और जिस तरह फास्ट बॉलर्स को आड़े हाथों लिया, इफ्तिखार के पास चांस और चॉइस कोई नहीं थी। स्पिनर्स को लाना चाहा उन्होंने ताकि थोड़ी सी पेस ऑफ हो सके। बोल्ड हो गए, इस बार फोर्स करने के लिए गए लेग साइड में और नवाज को लाने का फैसला सही रहा। उनने वक्त जाया किए बगैर हसन की विकेट उड़ा दी। थोड़े से ज़्यादा एम्बिशियस हो गए थे हसन इस मर्तबा। वो लेंथ थी नहीं जिसके लिए शॉट थी। एंगल थोड़ा सा आगे गिरा हुआ था और थोड़ा सा इनका वेट भी पीछे रहा है। अगर आगे से कनेक्ट करते तो शायद बेहतर रिजल्ट होता, लेकिन नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छे लग रहे थे हसन नवाज 24 बना के वापस। नूरपुर लायंस 56 for 1। उधर शाहजेब खान वन डाउन आते हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त पहले एक लेफ्ट हैंडर हैं इमामुल हक, वहाँ
इसे रोहेल नज़ीर को बुला लिया गया। ये टीमों की जो T20 चालें हैं ज़ाहिर है ये बदलती रहती हैं बिल्कुल हालात के मुताबिक, और होना भी चाहिए। कट करने को गए, जगह नहीं मिल सकी, फील्डर वहाँ पर तैनात थे। अच्छी बॉलिंग करते रहे मोहम्मद नवाज, एंगल क्रिएट किया, वहीं से टर्न करने में कामयाब हुए। नई गेंद पर आसान नहीं होता। मोहम्मद नवाज अच्छे T20 क्रिकेटर हैं। HBL PSL का जिन दिनों आगाज़ हुआ था मुत्तहिदा अरब इमारात में, ये बड़ी विकेटें लिया करते थे ग्लैडिएटर्स के लिए वहाँ। बहुत अच्छा सीज़न इनके लिए रहा, ऑलराउंड सीज़न। बैट भी परफॉर्म किया और पावर प्ले में स्पेशली इन्होंने ऑपोजिशन को हिलने नहीं दिया। अच्छी लाइन लेंथ पे गेंद करते रहे, उन कंडीशंस का भरपूर फ़ायदा उठाया। एक्सपीरियंस्ड हैं, अपनी गेम अवेयरनेस बहुत अच्छी है इनकी। Come on, Nawaz bhai, come on, Nawaz bhai. रोहेल नज़ीर को इससे पहले 2 बार बैटिंग का मौका मिला यहाँ, Come on, Nawaz bhai. बेतरतीब 16 और 3 बना सकें। पोटेंशियल काफ़ी है रोहेल में, लेकिन कुछ टाइम हो गया इनसे बड़ी इनिंग्स अभी तक देखने को नहीं मिली। इनिंग्स बिल्ड भी करते हैं, हिटिंग भी कर लेते हैं। आज थोड़ा सा प्रमोट ज़रूर हुए 1 डाउन पे। टाइम बहुत होगा, इमाम के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं। फील्ड में थोड़ी एडजस्टमेंट हो रही। रूम बनाने की कोशिश की थी, पहले लेग साइड पे गए, फिर शफल करके वापस आए। फॉलो ज़रूर किया था नवाज ने, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा हुआ नहीं उनको। 4 रन हासिल करने में कामयाब हुए रोहेल, और आखिरी गेंद पे बाउंड्री हासिल की। नूरपुर लॉयंस 62, एक खिलाड़ी के नुकसान। Come on, boys, come on, boys. Come on, guys, come on. Shabash, 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 Bati bhai. Shabash, bhai. Come on, boys. इफ्तिखार अहमद हाफ पैड में लगी, खासा आगे आ गए थे इमामुल हक, इसलिए अंपायर ने चुप साध ली। मुसलसल तीसरा ओवर कर रहे हैं इफ्तिखार अहमद, और वो भी पावर प्ले में, और उसकी वजह इमाम की मौजूदगी है, लेफ्ट हैंडर की। इस बार एक ही रन ले सकेंगे कप्तान इमाम। कप्तान को बॉलिंग कर रहे हैं। कोशिश ज़रूर होगी UMT मार्कोस की। ये पिछली ओवर की आखिरी गेंद पे बाउंड्री हासिल की थी। विद द एंगल फायर इन किया था, आर्म बॉल फॉलो करना चाह रहे थे, लेकिन फिर रोहेल अपनी स्टांस में वापस आ गए और विद द एंगल हेल्प कर दिया था। पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन उस तरह का इम्पैक्ट नहीं बना पाए जिस तरह की इनसे तवक्को की जाती है। आज एक अच्छा मौका है, अच्छी फाउंडेशन सेट हो गई हुई है नूरपुर लॉयंस की। यहाँ से एक लंबी इनिंग्स खेलनी चाहिए इन्हें। Bati bhai. Bowling, Bati bhai. हसन नवाज की विकेट गिरने के बाद एक खामोशी सी मैदान में छा गई है। पावर प्ले का जो रिकॉर्ड है यहाँ इस टूर्नामेंट में वो 66 का है, और ये अगर बल्ले से टकरा जाती तो ये रिकॉर्ड फौरी तौर पर टूट जाता। अभी भी टूट सकता है, 2 गेंदें बाकी हैं, 3 रन और दरकार हैं इसके लिए। Oh! शॉट को चेक किया, Rash है ना? खासा दूर गिरा दिया था इफ्तिखार ने रोहेल नज़ीर के। अपने लिए खुद मुश्किल बना ली थी, लेकिन
इन द एंड इतने कंट्रोल में थे कि सिंगल हासिल कर पाए, वरना ये एक और नुकसान हो सकता था नूरपुर लायंस को। पावर प्ले की आखिरी 3 गेंदें थी, शायद इसलिए अटैक करना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त ज़रूरत नहीं है। बेहतर ये कि स्ट्राइक इमाम को दें जो वेल सेटल्ड इन है। 11 के औसत से स्कोर हो रहा है। जल्दी कर गए और पहुंच गए। इमामुल हक अभी तक एक भी विकेट हासिल नहीं की। इफ्तिखार अहमद ने इस साल टूर्नामेंट में नूरपुर लायंस की टीम अपने पहले दोनों मैचेस हार गई थी, उसके बाद उन्होंने 2 फतुहात हासिल की, 4 पॉइंट्स हैं और आज भी अभी तक उसका पलड़ा भारी है। तो आखिरी गेंद अब पावर प्ले की और यहाँ पर गेंद निकल गई 7 के ऊपर से 4 रन के लिए और इस तरह रिकॉर्ड भी टूट गया। इस साल पावर प्ले का 70 रन पहले 6 ओवर्स में बने। जैसे आगाज करते हैं हसन नवाज और इमामुल हक, आज सीधा उसी तरह किया। ये बहुत ही शानदार शॉट था डाउन द ट्रैक और उसके बाद जोन में मिली गेंद और हसन नवाज बिल्कुल नहीं झिझके उसको बाउंड्री पार पहुंचाने के लिए। एक थोड़ा सा क्लासिक टच भी नजर आता है इनकी बैटिंग में। जो भी कोई खराब गेंद थी उन्होंने मेक श्योर किया कि बाउंड्री हासिल करें। इमाम दूसरे एंड पे बहुत ही जारहाना इनिंग्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं और ये पहला नुकसान था। नवाज आम बॉल के साथ नुकसान उठाना पड़ा। नवाज को रोहेल ने ज्वाइन किया इमाम को और आते ही इनोवेशन देखने में नजर आई। इस बार उठा के खेल दिया था रिवर्स में और एक खिलाड़ी के नुकसान पे अब तक का सबसे हाईएस्ट पावर पे स्कोर पोस्ट करने में कामयाब हुए हैं 70 नूरपुर लायंस। पावर प्ले में अब 4 ही फील्डर्स दायरे में रह गए हैं। पावर प्ले के बाद ये बड़ा शॉट खेला और यहां पर रन्स मिल जाएंगे 6। गेंद फ्लैट गई आखिर को। डीप मिड विकेट पर फील्डर लिया हुआ था लेकिन इमामुल हक ने उसकी परवाह की नहीं। एंगल के साथ ही इसे दे मारा। एंगल से नवाज को थोड़ा मोहतात होके करनी पड़ेगी बॉलिंग, क्योंकि ये एक इजी पाथ फ्लो है इमाम के लिए। घुटने को नीचे लगाया और लेंथ और लाइन भी मिल गई थी जिसकी वजह से ये स्टॉक स्वीप कर सके। थोड़ा सा आसान हो जाता है जब लेफ्ट हैंडर फेस कर रहे हो एक लेफ्ट आर्म बॉलर को, वो एंगल इजी हो जाता है। बाउंड्री चेक ज़रूर करेंगे कि गोया ये 6 रन थे या 4। हाँ, ये दूसरा मौका है। ये टीवी अंपायर जो है उन्हें 4 या 6 का फैसला करना है। ये भी है खासा मुश्किल लगता है। अगर हाफ वॉली पर लगेगी तो जाहिर है 4 होंगे, लेकिन बाहर लगता है कि बेस में लगी जाके स्कर्टिंग के। ये पहला एंगल जो था ज़्यादा मुनासिब था। जी मरीना, ये आप पे छोड़ते हैं। इस फैसले के लिए थर्ड अंपायर मौजूद ज़रूर है, लेकिन लग रहा है कि शायद इससे अगर फ्रेम आप देखें तो शायद यहाँ पे विद इन बाउंड्री ये बॉल बाउंस हुआ है। जी बिल्कुल, 4 रन यहाँ पे मिलेंगे। अंपायर ने यहाँ पे जो शक का फायदा था फील्डिंग टीम की तरफ दिया और अच्छी रन औसत है अभी भी। यहाँ जो आसमान
बिल्कुल छुपा हुआ है बादलों में। रावलपिंडी में हम पिछले कुछ दिनों से हैं, यहाँ बादल आते हैं, हवा चलती है, लेकिन बारिश जो है वो नहीं, उसका कोई इम्कान नहीं अभी। क्योंकि इन दिनों मरी में बर्फबारी होती है और मरी में जो बादल हैं, आना जाना उतरना वो मामूल है। तो इन दिनों उसका कुछ असर जो है यहाँ भी हो रहा है। काफ़ी असर हो रहा है आज, सर्दी की शिद्दत में थोड़ा इजाफा ज़रूर है। मैच की आप यहाँ दूसरा लेना चाहते हैं, खतरनाक हो सकता है, लेकिन अच्छी दौड़। बर वक्त दोनों अपनी क्रीज से निकले, रोहिल नजीर बर वक्त मुड़े भी। बहुत अच्छी यहाँ पे रनिंग बिटवीन द विकेट, खेलते साथ ही ये अंदाजा कर लिया था रोहेल ने कि बिल्कुल इनर सर्कल के थोड़ा ही बाहर जाएगा, और सर्वर अफरीदी जो बिल्कुल बाउंड्री के साथ लग के खड़े थे उनके लिए बहुत लंबा ग्राउंड था कवर करने के लिए। अच्छी लाउड क्लियर कॉलिंग 2 रन्स के लिए। 3 रन्स जो हैं आज बने थे सुबह के वक्त एक मुकाबले में, लेकिन बहुत कम बनते हैं इस ग्राउंड पर 3 रन्स। स्वीप शॉट, अब रिवायती, पहले गैर रिवायती शॉट पर चौका पाया था, उल्टा स्वीप और स्विच हिट भी करते हैं रोहिल नजीर विकेट कीपर्स का ये शॉट माना जाता है। ये स्वीप शॉट्स, पुल शॉट जो हैं ये भी विकेट कीपर की खासियत होती। शाहज़ाद आज मिडिल ऑर्डर में आएंगे और यहाँ ये मौका हो सकता था, गेंद जो है ये पैड से लगकर उछली, उससे पहले बल्ला लग गया था लेकिन विकेट कीपर से दूर रही। 8 रन्स के साथ ये ओवर गया 78 पर 1। फजा जो है उसमें मदद है फास्ट बॉलर्स के लिए, लेकिन नूरपुर लॉयंस के बल्लेबाजों ने सारे हमलों को आज नाकाम बनाया। इमाम इस वक्त 28 पर हैं, रोहेल 13 पर, खुशदिल, शाहजेब, उवैस, अच्छी लंबी बैटिंग लाइनअप है, इसमें शाहिद अजीज़ भी हैं, अच्छे ऑलराउंडर। बिलावल भट्टी एक और ऑलराउंडर डोमेस्टिक क्रिकेट के, फिर से वापस आए। वैसे फ्लैश किया और वहां एक टिपक आती हुई गई आकिफ की जानिब। बिलावल भट्टी जाने माने खिलाड़ी हैं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि पिछले 4 सालों में सिर्फ 3 T20 मैचेस खेले हैं इन्होंने। मैच प्रैक्टिस T20 के लिहाज से कम रही है, लेकिन एक्सपीरियंस है और ऐसे फॉर्मेट में एक्सपीरियंस भी काफ़ी मददगार साबित होता है। यहाँ पे पेस वेरिएशन करनी पड़ेगी इन्हें, क्योंकि नॉर्मली तेज़ गेंद करते हैं खिंची हुई लेंथ पे, और अभी तक ये देखने में आया है कि बैटर्स ने उस पेस को और उस लेंथ को बाउंड्री के पार ही पहुँचाया है। लेफ्ट हैंडर के लिए 3 फील्डर ऑफ साइड में और पुल करने के लिए गए। यहाँ पर मौका है, फील्डर के लिए मोहलत भी है और इफ्तिखार अहमद भी थे जो गलती ना करने वाले थे। तो बिलावल ने स्ट्राइक किया,
बॉलिंग क्रीज पर पहुंचते ही और शॉट ऑफ लेंथ, ये इनका रिवायती हथियार है, उसी पर चलता किया इमामुल हक को। इमामुल हक बहुत अच्छी निक में लग रहे थे, लेकिन ये थोड़ा सा अगर बैकफुट पे पंच करने जाते तो बेहतर था, क्योंकि बिलावल भट्टी का स्किड करता है बॉल। इतने लंबे कद के मालिक नहीं है, इतना ज़्यादा बाउंस मिलता नहीं जिसको पुल करने चले गए थे। नॉर्मली ये बहुत कंट्रोल में होते हैं, वेट भी थोड़ा पीछे था और हार्ड लेंथ से उठाने की कोशिश की, जिसकी वजह से मिस क्यू हुई शॉट। और इफ्तिखार खुश होंगे क्योंकि ये एक बड़ी विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं इमामुल हक। 28 बना के वापस। नूरपुर लायंस 79 for 2। यूएमटी मार्कोर्स की शोहरत है कि वो कहीं से भी पलटकर मैच में वापस आ जाते हैं। आज भी वैसा ही करने के लिए कोशां हैं। बिलावल भट्टी ने विकेट ली, उससे पहले नवाज आए, उनने भी अपने पहले ओवर में विकेट हासिल की। शाहजेब खान अच्छे बासलाहियत क्रिकेटर हैं, नए आए हैं इस फॉर्मेट में। अराउंड द विकेट बिलावल भट्टी उनके खिलाफ जाएंगे। स्किट करती हुई आई, बल्ला टकरा गया था और वापस जाना पड़ा रोहिल नज़ीर को। अच्छे फील्डर हैं साथ। अच्छी बॉलिंग की है बिलावल भट्टी ने, अच्छी पेस से कर रहे हैं। और इमामुल हक के स्ट्रैप में फॉल कर गए। नॉर्मली अच्छा पुल करते हैं और इस मरतबा लिफ्ट करना चाह रहे थे। अगर हॉरिजॉन्टल बैट से थोड़ा सा चढ़ के खेलते तो नीचे को तो शायद ये शॉट बेहतर लगती, क्योंकि वो लेंथ थी नहीं, स्किड भी हुआ गेंद। देखना ये होगा कि नूरपुर लायंस का मिडिल ऑर्डर अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ। ओपनिंग पार्टनरशिप ज़्यादा इनकी चलती रही, सिर्फ एक खुश दिल शाह हैं। इसको फिर एक शॉट बॉल कराई और एक रन हासिल करेंगे। खुश दिल शाह के अलावा अभी तक रन्स के लिहाज से कोई ज़्यादा खतरख्वाह कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिली। तो अब क्या प्लान होगा और कौन इनमें से जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि दोनों ओपनर्स वापस जा चुके हैं। शाहजेब खान में ये सलाहियत है कि वो सूरत हाल के मुताबिक बैटिंग कर सकते हैं। यहाँ अभी इनको जाना चाहिए बॉलर कि इनको पीछे पड़ना चाहिए। रोहिल नज़ीर सेट टाइम कि जो रवानी आई हुई है इस इनिंग्स में वो नहीं टूटनी चाहिए। एक दो गेंदें आप देख ज़रूर सकते हैं, लेकिन अब अच्छी बैटिंग पिच है। पहले मैच की भी निस्बत गेंद बेहतर बल्ले पर आ रही है और ये नहीं इनको भूलना चाहिए कि यूएमटी मार्कोर्स की बैटिंग उनकी ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ है, इसलिए स्कोर को ले जाना होगा 200 की तरफ। या फिर इनको उससे पहले अपनी बैटिंग की जो स्ट्रेंथ है उस पर ज़्यादा भरोसा होना चाहिए। नूरपुर लायंस को अपनी बॉलिंग पे हो भी सकता है भरोसा। अच्छा अटैक है, 81 पर 2। The youngest and the How cutest fan. cute. I love this game.
Smashed away. Rohel Nazir getting an opportunity at number 3. Young Shahzeb coming out at number 4. More of them. Middle, sir. All these kids, Middle. the families coming into the ground. That's the beauty of this tournament. All the entertainment and great weather. They don't mind if they sit in the cold. These are better seats, better view. They've really struggled with their bowling effort so far. Plenty of extras, another wide to go to that total. Absolutely. I think it's the extras that have really hurted them. 14 already. With 14 wides. Yeah, they've been 2 boundaries on the wide deliveries, yes, but still they've been all over the place, especially the fast bowlers. Mid-afternoon munch. What did you have for lunch, Ali? Wait on. Yeah, we've been looked after very nicely here. It's had a good lunch. Just loving the cricket also. A very, very good routine with our commentary captain Salman Bhatt taking us out for a walk after whatever we eat. It's good. You were shying away from that walk, Ali. It's very cold. Very cold. Spare a thought for these spectators and players. Well, players keep themselves warm. Plenty of activity. Shahzeb has punched it straight down the ground. Clearing his front leg. That's his go-to technique when he's looking to go big. And that's how he usually plays. Creates that space for himself. Likes to give himself room. This is a good opportunity. He's got enough overs to just settle in and then look to go big. He's been given another opportunity by the Lions. He's a good player. That's the walk. There you go. Very smart looking Salman Bhatt. Marina joined in. Probably. I need a little bit more. That was earlier this morning before the start of play. The captain Salman Bhatt leading the way. He likes it in the morning. But yeah, looking good. What are they talking about? We're all talking about you, Ali. Haris also made a comment about your glasses. Stylish man, Ali Yunus. I'll return the favor sometimes in the day. You got to exaggerate and do a little bit more than what I did. That's the diet. Oh, this angling in right across. Akif Javed was pleading with Faisal Afridi. How close was that, Ali Yunus? Runs given maybe. That's the only thing that could have saved Rohel Nazir. Otherwise it looked certain. With that angle. Let's have a look. Certainly 2 noises. Mr. Faisal Afridi is a good umpire, I tell you. Hardly makes a mistake. It's a very good umpire. Very good umpire indeed. Interesting follow through from Akif if we get a chance to see again. Because he came right in front of the umpire. Shahzeb a bit ungainly with that hoik. Looking to go over mid-wicket. There's a huge gap where he was trying to hit it. Yeah, that's where he usually hits. That's his area, long on to mid-wicket. But he has to find the right line to be hitting that. Well, he was there to be hit, I tell you. But just standing and delivering. Beaten by pace, maybe. You're not solid enough base, in my opinion, to launch from there. That's the gap that he was aiming. Mid-wicket is in the ring. He will find that fielder, which was obviously sitting at the edge of the circle, so there was an easy run available. It's a good learning curve for young Shahzeb, who's in very good form. Come back and talk about it. 9 gone, 86 for 2.
Flowers has bowled well. He started off his spell with a wicket and given away 3 runs. That's a 6. It had 6 written all over it. The moment he hit it, picked up the spot for himself and got the result. Well, Shahzeb was aiming for that strike in the previous over, but there was too much heat from Akif Javed. Bilawal Bhatti wasn't as quick and as spicy and slightly shorter as well in length. He had to wait for it, Shahzeb, and he swung really hard, got the desired result. Arrived a little slow. Shahzeb waited long enough, got lucky on that occasion. Bilawal correcting his length, asking the youngster to come on to that front foot. Good comeback. Because that short delivery worked against Imam ul Haq, he thought that maybe this is the length to go to Shahzeb also. But Shahzeb, I tell you, is very good with that shot. He's, as you said earlier, he fancies hitting that area mid-wicket square leg. There's a difference in batter, so the length must differ too. Both left-handers, but both different players. This is a good strike. It made a crunching noise, but straight to the fielder. He's got all the ingredients to be a good batter. Shahzeb Khan, and play big. And there's an opportunity being provided to him. You just have to use it. Make a mark, make your name out of it. And that happens once you perform and score big at this level. Things will happen for him. Looks like a very strong bottom hand grip. This is through the gap. Save your legs, Shahzeb. This is a gorgeous cover drive. Class written all over it from this youngster. Has to be the shot of the day. Pitched up, cleared it front leg, created that space for himself, and then just a jab, just a little punch, you can say, towards extra cover. The placement also immaculate. This boy can play. Surely can play. If you have the ability to play a square leg 6 and the very next delivery, just drive it through extra cover, you're full of skill and talent. Definitely, no doubt about that. This one is short, calling for 2 immediately. Touchdown and come back. Server's throw on the bounce. Not strong enough to challenge Shahzeb. He had a cover drive. It didn't have much of a flourish. It's just a solid punch. Got very strong forearms, this youngster. Win-win situation for all of us, Pakistan. Looking at some good youngsters. Have a look. Just the punch, not a big flourish. Have a look now. You'll give you a better idea. How strong are those forearms? Great balance also. Quick change, boys. We'll talk more about it when we come back after the drinks break.
Good start from Imam Al Haq and Hassan Nawaz once again for Nurpur Lions. 56 was the opening stand. This partnership is propelling now. Plenty of extras as well to boost the target. That's the 2 wickets. Hassan Nawaz cleaned up by Muhammad Nawaz. And then Bilawal Bhatti getting rid of Imam Al Haq, who hold out in the deep. That's the 2 bright spots for UMT Markhors, but their bowling effort and so far has been pretty sloppy. Yeah, that's the 2 experienced men getting the wickets, Nawaz and Bilawal, but giving away runs, 14 and 15. Look at Nisar, 1 over for 20 runs. Akif, 2 overs for 24. Iftikhar, 3 for 25. That's where the trouble is. Top 3 bowlers been very expensive and indisciplined. Chance for Akif to redeem himself. Oh, what timing. Umpire will want to have a look, but it just flew off the bat of Rohail Nazir. Plenty of pace on offer from Akif. Bilawal Bhatti doing a good job. 10 out of 10 for the effort. Was it good enough though? We'll have to have a look. Yeah, great effort from Mr. Bhatti. He just punched it, just a jab again. The ball races to your bat and then races to the boundary line. That's how the conditions have been here at Rawalpindi as they bring up the 100. Having a look at it again. Ooh, Mr. Bhatti, the effort is good. The result might not go your way, might not. This is quite a conclusive image. Probably we'll have another look from another angle, but his foot is clearly over the rope with the hand in contact with the ball. Good umpiring from Kasser Wahid. He probably didn't need another angle. Well done, sir. Oh, wide again. Oh, wide again. It has just not worked for Akif. He's Markhors' ace bowler. And when your ace bowler is having an off day, it's trouble. And it's showing on the run rate, 10.13, Faisal. Indeed, and another thing is Khwaja Nafi's wicket keeping. That dive may look spectacular, but that's the only way of covering the ground from the young makeshift wicket keeper. Not a lot of footwork at all. And look at those projected scores. Current rate 199. Nurpur Lions would have chopped your hand off if you offered them before the start of the game. They were going to get 199. Well on course for that and more if UMT Markhors and don't pull up their socks. Yeah, most definitely. And with the likes of Khushil Shah, Amir Yamin, Awais Zafar, not to forget Mohammad Junaid. He's been included in the side for the first time. Remember that inning? I think it was a couple of years ago when he took 5 wickets and scored 70 odd runs in a List A game at State Bank Ground. If you remember it, we were there. Yeah, very talented cricketer. Shahzeb got himself into an awkward position. Yeah, but this is the benefit of this championship, the concept of the Champions Cup. We saw the 50-over version in Faisalabad, the T20 Cup, Barrier Town Champions T20 Cup here in Rawalpindi is gathering momentum. We've seen more crowd interest today than ever before in this tournament. Look at those numbers. Turned up in the cold, but they've created a very warm atmosphere inside the ground. Just better from Akif. Right on the money. No room for Rohail Nazir. $105 for 2. Well on their way to another 200. Yeah, Barrier Town Properties. Barrier Town goes global.
Beretan Properties to develop a world-class gated community in Dubai South. Fantastic. Great initiative. That's gone straight up. Faja Nafe takes it. This is Rohail Nazir after getting a start. And for once, Akif Javed tastes success. I was itching to hit a big one. Royal Nazir was kept tight, wasn't given any room, so tried to do different, trying to create that length. Quick delivery, I tell you. Yeah, quick onto him. He was late, top edged it. Nafi making no mistake. Royal Nazir, a handy 22 he scored of just 17 deliveries. It's 105 for 3. Well. Surprise, surprise. We've got Amir Yamin at number 5. Wishdil Shah, Waz Zafar in the hut. And Amir Yamin has been promoted above them. A handy cricketer at the domestic level. Good strike rate. A decent average for the numbers that he bat. 34 years of age. Nicely played, Amir Yamin. Will keep the strike. 11 done, a successful one from Akif Javed. Nurpur Lions, 106 for 3. Yeah, that's a lovely scene here. Great sunset. Rawalpindi has been beautiful as far as the weather is concerned. Just love it here, and the crowd just making it double. Come in good numbers, Faisal. Almost on our left, the two stands, they're jam-packed. They've been entertained with some quality cricket too. Thoroughly enjoyed their Sunday. Come on! Saad Masood, the very impressive youngster, is onto the bowling crease. He's been very good with both bat and ball. Very impressive half century yesterday. Was taken for runs, so when he was bowling, he'll be a bit under pressure with this department of his game. Goes past the outside edge. 2 dots to begin with. That'll give him some confidence. Yeah, good start to his spell. Amir Yamin been promoted up the order. Wishdil Shah, Waz Zafar. Just to have that momentum going, maybe. They didn't want a youngster, maybe a Waz Zafar, just to give him a little more responsibility with Shahzeb Khan. The hair, because of this, got big on him. Royal Nazir played well though, but beaten by pace. Chance, direct hit gone. Amir Yamin's experiment didn't work out. Was Shahzeb, I beg your pardon, at the non-striker end. And Saad Masood is good with the bat, excellent with the ball, and very good in the field as well. A disappointing end to youngster Shahzeb's knock. Oh, that's ordinary cricket by Amir Yamin and Shahzeb. He went for it, but yeah, he had to wait till the ball goes past the bowler. Backed off too much. Disappointed, rightly so. He'll have to walk back, scoring 16 runs, 106 for 4.
UMT Markhors making a bit of a comeback. 105 for 2 has quickly changed to 106 for 4. Awaz Zafar was listed above Amir Yamin. Finally comes out. Khushtil still waiting in the wings. घूमेगा घूमेगा आजा आजा What a good cricketer Saad Masood is turning out to be. शाबाश सादे You can say he's a proper 3D cricketer. Bats well, can ball, and he can field like this. He's a gun fielder, great throw also. It's a great prospect in making, Saad Masood. Credit to Misbah Haq as well for playing him ahead of Zahid. This one goes underneath the bat of Awaz Zafar. They have a regular test cricketer in Zahid Mahmood in leg spin department, but Misbah has preferred this youngster and he has repaid his faith. 12 gone, 107 for 4. come on boys इस क्रिकेट मैच में यकसर सरवरा बड़ी सरवरा ड्रामाई तब्दीली आ गई है। सरवरा नूरपुर लायंस की टीम 7वें आसमान से अब आ गई है ज़मीन पर वापस। 79 रन पर एक ही खिलाड़ी आउट था और अब 105 106 पर मुतवातिर 2 विकेटें गिरी, जिसके बाद हालात अब हक में नज़र आ रहे हैं इस वक्त इफ्तिखार अहमद और उनके साथियों के। लेट बैट करने के लिए गए फैजान थे फील्डर, जिन्हें पहली बार टूर्नामेंट में मौका दिया गया। मिसफील्ड हुई लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। नूरपुर लायंस शानदार स्टार्ट के बाद एक भंवर से में फंस गए हैं और अपने सिवा किसी पे नहीं डाल सकते इस पोजीशन का मलबा। गेम अवेयरनेस की बहुत बात होती है। आपको एक ही जगह हमारे मैचेस हो रहे हैं, एक ही सरफेसेस हैं जिनसे हम डील कर रहे हैं और अपनी टीमों का भी सभी को खूबी से अंदाज़ा होगा तो किसको कितनी देर खेलना चाहिए, किसका काम है आखिर तक जाना। ये वो चीज़ें हैं जो कि प्लेयरों को रट जानी चाहिए यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर एक गलती तवातर के साथ होती नज़र आती है गेम आफ्टर गेम। डाउन द ग्राउंड खेला एक रन के लिए। शानदार स्टार्ट था, शायद इस टूर्नामेंट का सबसे तेज स्टार्ट था आज। नूरपुर लायंस की टीम ने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए पावर प्ले में, लेकिन उसके बाद एक ऐसी पोजीशन में आ गए हैं जहां पर अब दोबारा से तामीर से गुजर रहे हैं इनिंग्स की। इस बार स्वीप किया है और अच्छी टाइमिंग है, गैप में है गेंद और 4 रन होंगे। ये वो शॉट है जो इस टूर्नामेंट में आमिर यामीन ने बारहा खेलने की कोशिश की और आज आखिरकार उस पर 4 रन हासिल कर लिए इन्होंने। जहां स्कोर के सामने खेला, अच्छा गैप ढूंढ निकाला आमिर यामीन। इनसे बैटिंग में हमेशा तवक्कुआत रहती हैं, खासतौर पर जब टीम मुश्किल में हो तो ये अक्सर काम आते हैं। बैटिंग में भी कारआमद क्रिकेटर हैं और यहाँ रुक गए थे आमिर यामीन, खतरनाक हो सकता था लेकिन फखर जमान गेंद को बर वक्त जो है रिलीज करने से कासिर रहे और यूं ये जो हमने देखा था हिचर मिचर, ये और भी ज़्यादा नुकसानदेह होता। इस ओवर में 8 रन बने 13 के बाद 115 पर 4।
खुशदिल शाह को खेलने के लिए आना है। हाँ समझ भाई। मौसम अब जो है वो रिकॉल है, रिकॉल है। बल्लेबाजों का खासा तरफदार रहा है, इधर। खासतौर पर शाम के मैचेस में। बल्ले भाई। दूसरा रन भी हासिल कर लिया गया। लायंस की टीम जो है वो रास्ता भूल गई। 56 रन का बड़ा ही भरपूर आगाज साहब यहाँ हसन नवाज और इमाम की जानिब से। खुद ही आओ, उसके खुद ही बाद आओ। से स्पिनर्स ने बॉलिंग बॉलिंग खासी बॉलिंग। नपी तुली बॉलिंग की। कम ऑन। जी हाँ, ये वो विकेट्स हैं जो आज गिरे हैं। और पहला शॉट देखिए, जोर से घुमाया अगेंस्ट द टर्न। दूसरा पीछे फील्डर थे और आधा पुल आधा पंच, और इमाम इस पे बाउंड्री क्लियर ना कर सके और इशू को फोर्स करते हुए आउट हुए। फिर ये तीसरा विकेट देखिए, पुल स्ट्रोक खेलना चाहा, बैट का फेस जो है वो ओपन था बिल्कुल और किसी पोजीशन में नहीं थे खुद ही आओ, खुद ही आओ, खुद ही आओ। चल, चल। रहेल नज़ीर। और ये डॉट बॉल कट किया सीधा पॉइंट की तरफ। तो जब आप इतना अच्छा स्टार्ट आपको मिल गया और आप सेट खेल रहे हैं, तो आप इस पिच के ऊपर कितने रन्स चाहिए आपको मैच जीतने के लिए, कितनी अपनी बॉलिंग के हिसाब से आप अपना टोटल जो है उसको आप सेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर अपनी विकेट्स गवाई गई, जिसके बाद अब एक बार फिर इन्हें अपनी इनिंग्स की तामीर करनी पड़ रही है। और अगर यहाँ पर एक दो विकेट्स और गिरती हैं तो शायद यहाँ पर 150 रन करने भी मुश्किल हो जाएं। तो ये वो हालात को मद्देनज़र रखकर अपनी शॉट सिलेक्शन करनी चाहिए, स्पेशली उन बैटर्स को जिनके ऊपर उनकी टीम का ज़्यादातर इन्हिसार है। ये बड़ा शॉट है आमिर यामीन का और इस बार बाउंड्री को बआसानी क्लियर करेंगे। शानदार शॉट, और आज 2 बार लग गई है स्वीप, एक दफा 4 और एक दफा 6। 14 के बाद 124 पर 4। निसार अपने दूसरे स्पेल में आ गए हैं। पहला स्पेल इनका एक ही ओवर से आगे ना बढ़ सका, जिसमें 20 रन हसन नवाज ने बनाए थे। इनका जो बॉलिंग करने का इनका जो बॉलिंग कार्ड पिछले मैचेस में रहा है, फास्ट बॉलर्स जो हैं वो ज़्यादातर वही 4-4 ओवर्स करते हैं। स्पिनर्स जो हैं उनमें से कोई भी नहीं करता है अपने 4 ओवर्स। आज इफ्तिखार ने 3 ओवर्स किए और यहाँ 4 रन मिल गए। 4 किया था इनसाइड एज उवैस जफर का। जी हाँ, एक बड़ा शॉट मारने की कोशिश थी और गालिबन मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे इनसाइड आउट, लेकिन बॉलर ने फॉलो किया। किस्मत अच्छी, इनसाइड एज पे 4 रन मिल गए। ये देखिए, कोई रूम नहीं दिया। अच्छा बॉल, लेकिन खुशकिस्मती बैटर की। इस बार करीबी मामला हो सकता है कि अंपायर बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं उन्हें इस अपील में। तारिक भाई, आपने अभी स्पिनर्स की बात की, तो ये जो मैचेस हैं, ये 3 से 4 पिचेस जो हैं, इन्हीं के ऊपर तमाम के तमाम मैचेस होने हैं। तो जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे जाएगा, ये काफ़ी हद तक मुमकिन है कि स्पिनर्स जो हैं वो ज़्यादा बाअसर होते जाएं और पिचेस जो हैं वो थोड़ा सा उनको सपोर्ट करना शुरू करें। तो हम देख भी रहे हैं कि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जा रहा है, स्पिनर्स के ओवर भी बढ़ रहे हैं और उनकी विकेट्स भी बढ़ रही हैं। यहाँ मोहम्मद नवाज जो है जिम्न में पेश हैं। उसामा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। साद ने पहले मैच में अच्छा स्पेल किया था, आज भी उम्दा बॉलिंग की है साद मसूद ने। ये टीम संभल रही है फिर से इस पार्टनरशिप के जरिए जो उवैस जफर और यामीन के दरमियान हुई। खुशदिल शाह, उनको आज धकेल दिया गया है नीचे की तरफ। शायद
उवैस ज़फ़र को मिस वकार यूनुस जो हैं वो और मौका देना चाहते हैं। इसको अगर हम एक दूसरे जाविये से देखें तो एक इनफॉर्म प्लेयर हैं जो कि हाल ही में जिनकी फॉर्म अच्छी हुई है और जिन्होंने एक बड़ी इनिंग खेली है, और वो जितना ज़्यादा खेलेंगे उतना टीम के लिए बेहतर हो सकते हैं, उतना बड़ा स्कोर हो सकता है। तो उनका अंदर ना आना जो है वो उस पर सवाल तो बनता है, क्योंकि आमिर यामीन ठीक है इस मैच में अच्छा ज़रूर खेल रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो फॉर्म में नहीं थे। और अवैस ज़फ़र ने भी कोई बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली इस टूर्नामेंट के दौरान। पुल करने की कोशिश, टाइमिंग नहीं है शॉट में, एक ही रन बनेगा। क्योंकि अगर खुशदिल यहाँ पर 25-30 बॉलें खेलें और जिस फॉर्म में वो हैं तो वो 50-60 रन ऐड करने के अहल हो सकते थे, लेकिन कुछ और सोच रही है नूरपुर लायंस की थिंक टैंक। गेंद लगी है इनके ग्लव पर, इसलिए तकलीफ में थे। देखिए गेंद ज्यादा उछल गई थी और बोल्ड हो गए। इस बार अपनी स्टंप्स का सफाया करा लिया, पहले से पीछे हट गए थे उवैस ज़फ़र, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन उनका वार बिल्कुल खाली गया और बल्ला सिर्फ पिंडी की हवा को ही लग सका। जी हाँ, बहुत ज़्यादा रूम बना लिया, यहाँ तक कि बॉल उनकी रेंज से बाहर हो गया। ये देखिए बहुत पीछे जा चुके और अच्छी बॉलिंग निसार ने स्टंप्स को टारगेट किया और उड़ा दी 5वीं विकेट नूरपुर लायंस की, जो कि अब थोड़ा प्रॉब्लम में नज़र आ रहे हैं। 130 पे 5। ख्वाजा नाफे इन विकेटों के पीछे ग्लव्स संभाले हुए हैं, लेकिन जो बैटिंग ग्लव्स हैं उनमें ये ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आते हैं। ये देख सकते हैं 5वें ओवर में पहली विकेट गई थी, उसके बाद से एक पार्टनरशिप जो 79 तक स्कोर को ले गई, लगता था कि बात आगे बढ़ेगी, लेकिन फिर ये दाग लगते रहे हैं, ये हम देख सकते हैं। जी हाँ, और ये वो वाले दाग हैं जो अच्छे नहीं होते। अगर आप इसी पैटर्न को देखें तो जिस तरह ये सिलसिला चल रहा है इसको थमना होगा नूरपुर लायंस के अच्छे स्कोर के लिए। आखिरी 5 ओवर्स में अगर ये 45 रन भी करते हैं तो 175 पे ख़त्म करते हैं, जो कि इस टूर्नामेंट में एक ऐसा टोटल है जो बहुत ज़्यादा जिसका दिफा किया जा सकता है। लेकिन देखना है कि अब ये दो बैटर्स उसको अप्रोच करते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो इतने रन किए जा सकते हैं, 30 में 45 का होना इतना मुश्किल नहीं है। का इजाफा ये वो आखिरी विकेट थी, पहले से ही बहुत पीछे हट गए थे, गेंद को पूरा रास्ता दिया उन्होंने, स्टंप्स की तरफ आने का, स्किड करती हुई गेंद गई। निसार ने अच्छी वापसी की, पिछले ओवर में उन्होंने एक खिलाड़ी को आउट किया और ये पिछले 5 ओवर्स की कहानी है जिसमें पलड़ा वाज़े तौर पर यूएमटी मार्कोस का भारी है। खुशदिल उसके लेग की तरफ खेल के एक रन हासिल किया, अच्छी कप्तानी है क्योंकि विकेटें गिर रही हैं, स्लिप ली हुई थी उन्होंने नए बैटर के लिए, और इसका मतलब है कि विकेट्स के बारे में सोच रहे हैं और जिसे कहते हैं गोइंग फॉर द किल। और ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जब एक टीम आपके पास फंस गई है और वो अंडर प्रेशर है तो फिर उसे प्रेशर में ही रखा जाए। ये अच्छी हिकमत अमली इफ्तिखार की।
बॉलर्स ने भी एक अच्छा कमबैक किया, अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की, अटैक किया इन्होंने बैटर्स को। और फिर फुल टॉस और आमिर यामीन इस शॉट को टाइम करने में नाकाम रहे, लेट हुए हैं दूसरी दफा। पहले पुल शॉट मारने गए थे और वो इनके ग्लव पे लगने के बाद बैट पे लगी थी, और यहां पर ये फुल टॉस जो है बहुत करीब आ गई। और अंपायर जो है शायद थर्ड अंपायर से मशवरा कर रहे हैं इस गेंद के बारे में, चेक कर रहे हैं कि ये नो बॉल है या नहीं। कैसर वहीद टीवी अंपायर देखना चाह रहे हैं कि आया ये नो बॉल तो नहीं थी, उस हाइट की वजह से बिलावल ने यॉक करने की कोशिश की, ये हाई फुल टॉस हुई। बिलावल जो है ये लगता है कि मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गेंद जो है वो वेस्ट के नीचे आ रही थी, इसलिए अंपायर राणा का ख्याल है कि आप कंटिन्यू कीजिए किसी मुश्किल के बगैर। बिलावल भट्टी ने अभी तक बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, 18 रन्स दिए हैं, अपने तीसरे ओवर में है और एक विकेट भी हासिल की है। खुशदिल शाह अभी तक एक ही गेंद खेला है उन्होंने, और पिछले मैच में बड़ा शानदार और तेज 50 किया था। ऑफ साइड पे कवर, मिड ऑफ, अंदर है रिंग के, और ये बड़ा शॉट, ये जोन में था खुशदिल की, और इसको जाना होगा बाहर बाउंड्री रोप्स के। ये 6 रन्स, और ये वो फॉर्म है जिसका हम जिक्र कर रहे थे कुछ देर पहले। और आते ही अपनी धाक बिठाई है इन्होंने इस 6 के साथ, जो कि अपने दूसरे गेंद पे लगाया इन्होंने। ये जिस जगह बिलावल भट्टी ने गेंद किया है ये तो जोन है खुशदिल का, आगे या टांगों पर, यहां पर बचना मुश्किल है बॉलर्स का। बिलावल भट्टी जो है हमेशा 2 लेंथ्स पर आना पसंद रखते हैं, 2 इंतहाओं पर रहना पसंद करते हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ या फिर यॉर्कर्स के लिए जाते हैं। खासी हद तक खराब डिलीवरी साबित हुई। अब अराउंड द विकेट आज चले, खुद ही अराउंड द विकेट कहकर खुद ही ओवर द विकेट आने लगे थे। अजीब माजरा था ये। ओह, ये नो बॉल यकीनी है, ये बीमर, ये नो बॉल होगी, फ्री हिट, और अंपायर जो हैं ज़रूर इन्हें ज़बानी वार्न भी करेंगे। जी हाँ, ये गुफ्तगू जारी है जिसमें शायद उन्हें इस बारे में बता दिया जाएगा। तारीफ करनी होगी खुशदिल की, अच्छा वॉच कर रहे हैं बॉल को, स्पेस पे बीमर को छोड़ना, बड़ा कंफर्टेबली हटे हैं आगे से गेंद के, एक अच्छे रिफ्लेक्सेस दिखाए। देखिए बड़ा करीबी मामला हो सकता है ये, और ख़तरनाक भी। और अब अगर इस इनिंग्स में ये दोबारा जो है ये बीमर करेंगे तो फिर ये मजीद बॉलिंग करने के नहीं रहेंगे मजाज। ये पहली और आखिरी वार्निंग होती है बॉलर के लिए। स्लो डिलीवरी, ये वाइड रही, हालांकि खासा 19-20 वाला मामला था। बिलावल खुश नहीं है इस फैसले से और कंप्लेन कर रहे हैं। वाइड बॉल का इशारा था अंपायर का। जाहिर है एक अच्छा पैच चल रहा था यूएमटी मार्कोर्स का, और इस ओवर में रन्स भी बने हैं, और उसके बाद एक नो बॉल, उसके बाद फ्री हिट, और फ्री हिट पे वाइड। तो ऐसी चीज़ें जो हैं गेम का मोमेंटम बदल सकती हैं, और इसी वजह से खुश नहीं है बिलावल भट्टी। ये शॉट हवा में है, फील्डर आ रहे हैं, लेकिन फ्री हिट है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं नूरपुर लायंस के लिए। स्लोअर बाउंसर, और इस पे पावर जनरेट करना मुश्किल होता है बड़े शॉट्स के लिए। ये गेंद भी हो ही गया, देर आए दुरुस्त आए।
जहाँ ये खासा ओवर तवील है जो कम से कम 8 गेंदों का ज़रूर होगा। बिलावल भट्टी ये उम्दा शॉट खेला, खासी मेहनत करना पड़ेगी। हाथ आगे बढ़ाकर रोकना चाहते थे, नाकाम रहे नवाज। और चौके पर ये ओवर इख्तिताम को पहुंचा आमिर यामीन के 146 पे 5। Partnership brewing up. 16 of 6 deliveries. Expensive over from Bilawal Bhatti. 16 of it has given some momentum back to Nurpur Lions. And they needed an over like that. Bilawal Bhatti gifting few deliveries to Khushdil Shah in his zone, and we know what he's capable of. He will hit you long if you ball him in his zone. Akif Javed is back, 3 overs for 32. Shot one, it's pulled, fielder coming under. Who takes it quite comfortably? Samad the man there. Not to be this time from Khushdil. Drop shot from Akif, outside off stump, trying to fetch it from there. Had some extra bounce as well. Wasn't in all control, Khushdil Shah, trying to accelerate. Oh, lucky there. Akif overstepping. How costly that will be for UMT Markhors. You should have seen how quickly Khushdil Shah moved back. He was always almost halfway. Suddenly saw the no ball on a big screen. Quickly moved round and moved back. I'm not done yet, he said. Still the decision is pending, but it seems like it's a no ball. Khushdil is going nowhere. Faisal Afridi says yes, it's a no ball. Not that he's denied his wicket, he's bowled a free hit too. And that too to Khushdil Shah. Free hit. Khushdil still there in the middle. Luck favouring him. Akif Javed just oversetting ever so slightly. Well, now more drama to this innings. Yeah, they've been wavered. Markhor bowlers, 18 extras, 16 wides and 2 no balls. Not good. He'll take it no matter where they go. A boundary is always handy. And Khushdil Shah, where he should have been back, has hit a boundary. Yeah, Akif just pitching it up, trying to hit that wide Yorker. Wasn't that wide, was still in the zone, just going across off stump, flashing hard. That's what Khushdil always does. Got the result he was looking for. How costly is this going to be? Wide, another one from Akif. 150 up in 16.1 overs. Iftikhar, the captain, is not happy. Few words from Fakhar Zaman also. Nisar running all the way from fine leg to Akif. Everybody around him. Yeah, to be honest, it's poor show as a bowling unit from UMT Markhors. Openers were back in the hut. First one fell on 56. Not an experience in terms of match practice. The middle order, they had an opportunity, but 2-3 bad overs put them back in the game. Bowl him! No problems there, I hope, with the no ball.
Yet to see it, but yes, timbers by Akif. Yeah, picked up the length. Khushdil was a wild swing. Let's hope there are no worries there. No. All good for Akif and UMT Markhors. And this time they finally got their man. It skidded on. That's why it hurried on to Khushdil, who was in no position to put it away into the leg side. Gone on 12, Khushdil Shah. Nurpur Lions 6 down on 152. Right, an opportunity for Shahid Aziz. He's made his name as far as his bowling is concerned. But we've been told that he's got potential with the bat too. The strike rate of 144. Highest of 27 not out, just 21 years of age. The opportunity is there. He's got enough overs behind him. He can just show us what he's got as far as batting is concerned. But Akif Javed, he will be a relieved man. Just cost 4 runs extra when he bowled the no ball. Not interested at all. Whatever is happening in the ground. She's in her own zone, sleeping. Power nap. Another wide. Akif caught the wicket on a previous delivery. I don't know why he opted to go wide. Look at that. Good hard length with some pace. It did skid on. And Khushdil, that was a wild swing from him. Usually he keeps his eyes on the ball and hits that length pretty decently, but not on that occasion. Some sort of nerves for Imamul Haq. Change of angle for Akif. Yeah, this is better. This is where he needs to be most of the time. Bowling the right-handers. He's been expensive. 39 runs. Imamul Haq, the captain of Nurpur Lions. What would he be thinking? They've missed out on scoring a 200, yes, because they were off to a great start, then lost their way. And then everybody who came into bat seemed like in hurry. Everybody coming and looking to hit big on every delivery, losing the wickets. That has been the story for Lions in this inning. Yeah, I did ask him at the toss that his opening partnerships have been working, but the middle order hasn't been exposed. And he said, let's pray it keeps it that way. But tonight they have faced some trouble as far as the middle order is concerned. Yes, potential is there, but no one has actually stood up to deliver yet. They've managed to put 153 so far, courtesy to some poor bowling from UMT Markhors. Seven runs off the over. Still 2 deliveries to go. He's picked that one up all the way, quite handsomely. We've heard about his batting talent. He's showing it to us now. Not shy to give it a whack. Shahid, he's not happy. Dragged it short, Akif. I don't know for what reason, because he bowled some good Yorkers in the slot. With the angle, no worries. Just got in the line of the delivery, Shahid. And he made sure he got a really solid connection for a maximum, turning out to be a really expensive over for Akif. 13 now. 5 deliveries, 2 wides and a no ball already. Only in this over, by the way, from Akif. Good intent from Shahid, looking to go big. Another wide.
just when it goes wrong, it goes horribly wrong sometimes. It's that sort of an evening for him. I'm not sure what the idea is, what the plan is, because he's a decent bowler. He can bowl those Yorkers right in the block hole, and that's what you need to be doing. Dropping it short on this surface with tail-enders who can whack it hard, it's not an ideal ball to bowl. After delivering 10 deliveries, finally in over ends. 161 for 6. Sunsetting, beautiful sunset here at Rawalpindi Stadium. I love the skies here. Got plenty of vibrant colors. Orange, pink, purplish. And action to be witnessed in the middle. He hasn't got far, not gone far, straight to the fielder. Another one bites the dust. It's Shahid this time. Looking to go big. 3 overs still remaining. Yeah, down the track was Shahid. No worries there for Nisar. He's quite disciplined in that order. Trying to give it some room. Wanted to go towards the leg side. But that was a good delivery on hard length, hitting it hard. Shahid, a short cameo, came to an end. Gone on 7. 7 down on 161. Right, Mohammad Unaid, all the way from Quetta. 6 runs, but he's better than that, I tell you. We've seen some quality innings from him. He's a good all-round cricketer, left-arm spinner, can bat too. That's a good start. But Marina Iqbal, just a question for you. You're in the Nurpur line as a batter. What the message is for everyone just coming and throwing the bat at it and losing the wickets? They seem to be in hurry. Why so? That's a good question. I don't know. I think they've lost the plot here. Just want to keep on accelerating. Yes, they will get opportunities where they can easily hit boundaries. They're getting the extras. But throwing away your wicket is not ideal. Pick up your bowlers. Pick the areas you want to hit boundaries. Non-striker, direct hit. Saad Nasoos, the fielder. He's normally a very good fielder. Very quick. At times, what happens that you have decided on a certain target, especially when you've got the momentum early on, and that target sticks into your mind. Ball watching is not a good option. Had it been a direct hit, he would be traveling straight to the dugout. But you need to readjust yourself according to the situation as a batter. And I think right now, this is a decent total. They can push it around 180, probably 185. Smashed hard but fielded well by Faizan. Faizan playing his first game of the tournament. Got a chance in playing 11. A lot of eyes will be on him as well. He's a good player. Very wristy. Faizan being included for the first time. He's represented Lahore Qalandars in HPL PSL.
It's in the gap. It's in the gap, but not quite getting to the boundary. Couple of runs for Amir Amin. Yeah, when they started off this inning, they looked like they're going to get to 200 quite easily. But then lost the way. Everyone coming and trying to hit big. Shazib got himself run out. Amir Amin been promoted. All these things happened for Nurpur Lions in search of maybe 230. But they're looking for that after the start. Maybe, who knows. Change in pace into the pitch. 18 done, 167 for 7. And Bilawal Bhatti, he's been expensive. 31 given in 3 overs, picked up 1 important wicket of Imamul Haq. This one is going to be a very tricky over. Amir Amin is on strike with Junaid. He is skiddy, but just need to be clear. Nothing tricky about this. Again, they've learned their way into the pitch, slower ones. Right, Barrier Town Properties, they go global. They're developing a world-class gated community in Dubai South. Fantastic, brilliant. Right, last couple of overs, 11 deliveries to go. How many more would they be looking for? Maybe get to 185. If they can get there, they'll be a happier side. Good bouncer, slower one. They're running for it and completing it. That must be annoying for Bilawal. It was a well-directed bouncer, but still they managed to pick up a single. And it's a good ploy because Amir Amin is on strike, who is more comfortable facing Bilawal. It won't be easy, he's skiddy. Have a look at that cross-seam delivery. Well-directed, had to duck, but still managed to pick up a single there. Yeah, normally we see wicket keepers taking off their one glove soon as they realize that the ball is beaten. Wajan Afi not being the regular glove man. I think he forgot, maybe. No, I think he's happy to keep them on because it's cold. Now he's done it. Is he listening to you? If he is, he's the only one in the world who listens to me. Not exactly. He's put it back. Sorry, Ali. Not even one. This is good bowling, real good bowling. Good comeback by Bilawal Bhatti. He's bowling it according to the surface, mixing it up, slower ones, Yorkers, everything, you name it. That's experience for you. Yes, much better this spell. Beautiful sight of Rawalpindi Cricket Stadium. The skies are gorgeous. Just a tint of that orange and pink coming through. Beautiful camera work. That's Rawalpindi for you. Beautiful. Connection. And 6-2. Amir Amin using the long handle, getting a 6 for himself and the team. Yeah, Amir Amin couldn't really put it away in the area he was targeting, but nonetheless picked up a maximum, and that's because of the pace. Again, skidded on, waited for it. Huge flashy blade there. Made a good contact and earned a maximum there, spoiling
Otherwise, a good over from Bilawal. Again, change in pace, slower one. He's bowled smartly. All this given away 40 runs, but very smart bowling. Could have been more, by the way. 90 done, 178 for 7. You see the signal there from the umpire? It means that Markhors have been penalised because of the slow over rate. They'll have to have one more fielder inside the circle. So not 4 but 5. Mid-off they brought inside. Penalty. Whacks this one. Come back for the second. Yes, Junaid is too quick. Makes it quite comfortably in the end. Yeah, more trouble for UMT Markhors. Now there's a definite boundary option for either Amir Yamin and Junaid. They'll have to be very careful, Nisar, in which line and length he'll be bowling to. Offside is packed. Just one patrolling the deep cover boundary. We've got mid-off, so plenty of gaps there to be picked. Good bowling. 2 is the call. Iftikhar all the way from mid-off, just covering it up. It's really been weird, the bowling from the UMT Markhors bowlers now being adding insult to it. They've had a penalty where they'll have to have 5 fielders inside the circle. It has been that sort of an evening for their bowlers. Although very seasoned bowler, Aqib Javed, Nisar Ahmed, Bilawal Bhatti very experienced. Again, slower one into the pitch. I think that has been the order of the day, of the evening rather. Just bowl it short and slow in nature. Junaid and Yamin both playing into the field. They've got mid-off for both of them up in the circle. All you need to do is probably give yourself some room and try to clear it. That offside in a ring, that is a definite boundary option, but haven't seen anyone do it. Even now, just shuffling in, pushing and forcing the shot into the leg side. That is good running, but if you're looking for a boundary, that's not a smart batting. He's mixing it up, but the idea seems to be the same. Look to hit it towards long on or mid-wicket, that's the idea. But yeah, maybe look to change the way you think. Good running by Junaid. He was certain that he's going to come back. He was the one coming to the danger end, by the way. Makes it quite comfortably in the end. This is good. Very good by Nisar. Finishing it off in the high. Last delivery to go though. Well, Nisar would definitely be looking to close it without conceding a boundary. And Amir Yamin, well, he's got plenty of options. Junaid on strike now. They've got mid-off, deep cover, protecting the boundary. He can go straighter or over mid-off. Third is in the circle as well. Right, the last delivery of the inning. Junaid hits it hard, straight. Amir Yamin coming back for the second. No, he's not. Oh, yes, now. Now they easily can, because Iftikhar Ahmed has missed it up. So that's it, end of the inning. 187 is what Nurpur Lions are able to score after their 20 overs, losing 7 wickets. There will be a happy side getting to 187 because they lost the way in between. And then it was Amir Yamin who steadied the ship with his 39 runs. Support by Awais Zafar, Khush Dil Shah, Shahzeb Khan all chipped in with their little cameos.
and got the score to 187. UMT Markhors has been all over the place as far as bowling is concerned. They're better than that. Leaked quite few runs in the last 4 overs. It was 41. And Lions make sure that they capitalize it, posting 187. Well, it started off with a steady opening partnership. Imam scoring 28, 24 for Hassan Nawaz, 22 for Ruhail. After that, there was a bit of a jitter. Amir Yamin still not out on 39. Zafar Kushtil couldn't really contribute much. Junaid with 5 not out. They all managed to put 187 together. Yeah, at least everyone has played over the strike rate of 100. I think that has been the plan for Nurpur Lions. Just coming and whacking the bowling away. They've been very indisciplined. They will not be proud of this bowling effort. 2 wickets for Akif though, but the economy on higher side. 11 2 wickets for Nisar, 1 each for Nawaz and Bilawal. Extras, 24 of them, as 187 for 7. Right, Shah Faisal, who do you have with you? Well, I've got Amir Yamin with me. Thank you very much. Ali Yunus. Amir, आज आप बहुत अच्छा खेले. बैटिंग ऑर्डर में प्रमोशन मिली, ज़्यादा जिम्मेदारी आपको दी गई. कैसा लगा? जी बस फैसल भाई बस ट्राई की कि अच्छा फिनिश करूं. शुरू में थोड़ी सी हमने विकेटें लॉस की दरमियान में, तो मेरा यही था कि नॉट आउट जाऊं और स्कोर को 190 तक लेके जाऊं. और जिस तरह की कंडीशंस चल रही हैं, ठंड काफ़ी है, आप देखते हैं कि फर्स्ट इनिंग में जो स्कोर लग गया बोर्ड पे, कैसा देख रहे हो? आई थिंक बहुत अच्छा रन है. 190 रन. बॉल अच्छा ग्रिप हो रहा है, स्लो बॉल भी और स्पिनरों का भी ग्रिप हो रहा है. बस कोशिश करेंगे कि इसको अच्छा रोकें. और बैटिंग बॉलिंग आप जहाँ भी खेलते हैं, जब भी खेलते हैं डोमेस्टिक लेवल पे, आप हमेशा टॉप परफॉर्मेंस में रहते हैं. बस फैसल भाई कोशिश करता हूँ एज ए प्रोफेशनल अच्छा करूँ. बैटिंग आए बैटिंग, बॉलिंग आए बॉलिंग. बस बॉलिंग में भी पूरी एफर्ट करता हूँ, बैटिंग में भी और फील्डिंग में भी. बस एज ए प्रोफेशनल ये है कि अच्छा करता रहूँ. और जिस तरह T20 क्रिकेट है, बहुत फास्ट है, अपने एक्सपीरियंस को आप यूज़ करते हैं, जो नॉलेज आपने इतने सालों से हासिल किया, वो कुछ आगे यंगस्टर्स को भी ट्रांसफ़र करते हैं? जी बिल्कुल, ड्यूरिंग द मैच भी और नेट्स पे भी बिल्कुल करता हूँ. उनके साथ जो रिक्वायरमेंट होती है कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे बैट्समैन फंसा हुआ उधर बॉलिंग करें और कोशिश करें कि अच्छे बॉल्स करें. जितने डॉट बॉल होंगे उतना ही फ़ायदा होता है. और हमेशा आपको अच्छा खेलते देखकर बहुत अच्छा लगता है. वेल डन टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द गेम. थैंक यू. And Amir Yamin, ladies and gentlemen, it's back to you guys up in the com box. Thank you very much, Shah Faisal. 187 for 7, Nurpur Lions managed. They were off to a very, very good start when Imam Ulaq started off inning with that fantastic pull shot. Hassan Nawaz with his form continued with his big hits. Some quality shots all around the ground. They were helped by some poor bowling by Nurpur by the Markhors rather. They kept hitting boundaries. Imam Ulaq cashing on his form, made some huge sixes, and then Nawaz got the best of Nawaz. Well, Nazir were promoted up the order. He did well, a little cameo from him, but everyone looked in a hurry, looking to go for big boundaries. Imam Ulaq looked really good until this happened. Just ballooned one in the air and lost his wicket. Khar taking a smart catch. Bilawal Bhatti came in action. Went for some runs. Shahzaib with some quality hitting, some glorious clever drives. It all looked good, but then UMT Markhors with short intervals managed to put pressure back on line. This was a suicidal attempt by Shahzaib, running himself out. Amir Yamin took responsibility on himself, and this was another poor shot. He's trying to ramp it over. Pushdil Shah, well, he was lucky tonight. Put fewer ways, throw the bigger boundaries. They got some momentum back, flashing hard, anything outside off stump and shorter. This was a wild swing, was undone with a good length. Shahid coming in, hit a 1 maximum to go with, but couldn't really capitalize the opportunity. Was a soft dismissal courtesy to Fakhar. Amir Yamin on the one end made sure that Nurpur Lions managed to put a challenging total of 188. Right, the target is 188 for UMT Markhors at 9 runs per over. That's coming your way after the break. Cracking stroke. Wow. Hassan goes big. It's huge. Shot asking for trouble and smashed by Imam Ulaq.
बोल्ड हो गए, बड़ा शॉट खेला और यहाँ पर रन्स मिल जाएंगे 6. Has gone straight up. Wajanape takes it. Chance, directed, gone. ये बड़ा शॉट है यार आमिर यामीन का और इस बार बाउंड्री को आसानी क्लियर करेंगे. ओ बोल्ड हो गए. And 6-2.
Welcome back to Rawalpindi Cricket Stadium. Lions taking on UMT Markhors, match number 12 of Barrier Town Champions T20 Cup. This is what happened when Nurpur Lions batted. Plenty of starts, not a single half century for them. Amir Yamin top scoring with 39. Good starts once again from Imam Ul Haq and Hassan Nawaz. Rohil Nazir also chipping in with 22. Plenty of extras, very, very generous were UMT Markhors bowlers, 24 the count. Akif Javed was very expensive, one of those days where he couldn't get his lines and lengths right. Ended up with 2 for 47, 2 for 40 for Nisar as well. Nawaz, surprisingly, was the pick of the bowlers, didn't even bowl his full quota of 4 overs. Very, very sloppy start with the ball for UMT Markhors. But now they will have to do it with the bat. Plenty of good batters in their lineup. Fakhr Zaman, well, if it's his night, no target is big enough. Khwaja Nafi on the other side has been on decent form as well. Markhors got defeated in their last game. Would really look to bounce back. Nurpur Lions, on the other hand, have been on a winning streak. 2 on the bounce for the men under Waqar Yunus. They posted a very good total on the board. Khwaja Nafi has shown sparks of brilliance in this tournament. Just 22 years of age, 15 games in this format. 2 half centuries. Average and strike rate will go up the longer he plays. Well, you can't say much about Fakhr Zaman. He's a world beater. That average and the strike rate over a period of time has been terrific. 45 50s, 3 centuries. And the ever reliable Amir Yamin has got the ball in his hand. 104 wickets. Always puts his hand up for his skipper wherever he plays. A very wholehearted cricketer. And alongside me is from Pakistan skipper Salman Butt. Very good evening, Salman. Thank you, Shaji. Very good evening to yourself and to the viewers as we kick off. It's Amir Yamin to bowl the first delivery to a brilliant batter who can be a potential match winner, Fakhr Zaman. He was out in slip against Samin Gul, who creates the same angle. So we see a slip at the moment. This time it has been blocked and run straight away. Have you ever played in street cricket? Tip and run. Quite a lot of time actually, because narrow streets, there's not a lot of space here, so just play it late or soft and just run. Run for your life. Fakhr Zaman met the first ball with a full face of the bat. Compact. This will be a good battle. Amir Yamin's natural angle will be into the right-hander Khwaja Nafi. He's got deep square leg on the onside. That's the sweeper. Mid-on is up. Mid-off is up. Third man is back as well. And a wide slip. That angle will be trouble. Neat deflection from Khwaja Nafi to the huge roar of the crowd. He's off the mark in style. Good start for team UMT Markhors as well. We saw a flyer with the other side, Nurpur Lions, and once again, boundary of the first ball for Nafi. 5 of the first 2 deliveries. This time he goes across and he asks the question to the umpire, who is unmoved. As Nafi stepped down the track, wanted to hit it with the swing over the onside, and he missed it. Luckily for him, he wasn't where it could have been fatal. Yes, he was
outside the line of off stump, and that is why the umpire has turned it down. Very wide on the crease was Amir Yamin, creating a big angle. But the first delivery that Nafe got away for a boundary, it was on a middle and leg stump line. So he's taking chances. Definitely is eyeing that inward angle of Amir Yamin. This time took it off his pads again. Sweeper will come around. And Nafe will get back for the second. Once again, it looked like he took it off the stumps. It'll be an interesting replay. Another couple to Markhors and Nafe. And he's done well. He's used the angle that is a natural angle for Amir Yamin. He can bring the ball back into the right-handers, and he does so while he goes wide of the crease as well. Just have a look at this ball coming in, and the batter uses the angle. They've strengthened the offside field. Take the slip out and put it on the offside. Still just 4 on the on. That is a cracking shot. Really flew off the bat of Nafe. All happening at a rate of knots. A cut stroke, hit hard. Great stop by Hassan Nawaz at point. He is the live wire. He took some important catches in the previous win for Nurpur Lions. Have a look at this stop. It travelled faster from the bat. Hassan Nawaz dives. Clean fielding effort. Good cricket all around. Went clean into his hands. That's important on this cold evening. One would get wrapped around your fingers. Oh, sloppy. Praise him, and he lets you down, and he lets the bowler down as well. And also that this shot wasn't hit that hard. But maybe something happened off the turf. Something that disturbed the line of the ball. It's a first over gone. It's 11 for none. Awais Anwar now, the tall Awais, to bowl to the champion batter Fakhar Zaman. As the last ball which just went through the point fielder Hassan Nawaz. We'll have a look what disturbed the line of the delivery. Not much actually. It should have been a better fielding effort. Maybe expected the ball to bounce a bit more, but then it wasn't flying off the bat. Any young fielders watching, he went down onto his knees too soon before the ball arrived, and then not much deviation of that bounce. Awais Anwar has been very impressive in patches in this tournament. Inward movement, inside edge. Wow, that was close. Right on the money, the youngster. This one swung back in sharply, and this is something Fakhar Zaman will have to watch out for. He's a tall lad. Just have a look at it. Come back in the air and off the surface as well. So this is a good start, and this might just entrust the bowler a bit more to keep it going and maybe to just pitch a touch up. Again, creating that gap between bat and pad. Throwing this one slightly wider, making Fakhar reach out for it. Inside edge once again goes on to the pad, and another day it could easily have gone on and cannoned into those stumps. This is a very good start. Thorough entertainment today on Sunday afternoon and evening now. It's foggy, it's murky, it's cold, but look at that crowd. Absolutely wonderful. Stands towards our left. They are completely full. Yasir Arafat enclosure and the Mira Bakhsh enclosure. There you go. The fog was descending quite low during the break.
Once again, movement, more movement, squaring Nafe up. Well, I wonder what the surprise is for Nafe, because he was at the other end. He saw two balls swinging into Fakhr. That means the ball is going to go away to him. Just have a look at this. He's squared on like he wasn't expecting the ball to move away at all. These are little things that the opening batters need to observe while they're on the non-striker's end. Coming from a former prolific opener himself. Any youngsters listening? Oh, this is big. This is big. Did he get a scratch on it? Otherwise, it was plumb in front. That was a poor option. This shot that Nafe was looking to play. Just have a look at that. Just a bit high. And the height is what saved him. Good decision by umpire Afridi. Faisal Afridi in his days was a very quick fast bowler. Somebody who could ramp up lots of pace. Should have some sympathy for the fast bowler then. It's a different job. Benefit of the doubt goes to the batter. Slightly wrong line, but good heat on it and good bounce. Yeah, definitely when he was a bowler, probably he didn't like the idea of benefit of the doubt going to the batters, but now he would have to live with that. Well, umpiring is not an easy job. In fact, there's always somebody who's not happy because of your decisions. So you have to give them margins. They only have a look at things once. They do not have the luxury of replays like we do over here. So it's a first look and make a decision sort of a thing, which is never easy. Well, this is some modern stuff for you. Goes down on one knee outside the off stump and rams it over fine and gets the boundary. Nafe moves to 10 and Markhors to 12. In fact, 16 at the end of 2 overs. Crowd's really enjoying themselves, and it's a good contest. Fakhr, it was only going to be a matter of time before you saw that big booming backlift and a huge swish. But Khwaja Nafe has been itching from the word go. Finally put bat to ball the way he wanted. Just got down on one knee, kept his eye on the ball till it met the bat. And just that flick of the wrist, almost carrying it over. Just a couple of bounces. Yes, he got into the position very quickly, and very important thing was that he had his eye on the ball all the way through this execution, which enabled him to get it right. Once again, the angle coming back to him off his thigh, just the leg by. He's looking to give himself room and go through on the offside. The experience of Amir Yamin didn't give him anything to work with. It's a good battle. Say what you like about these young modern batters. They're going hard after every ball. 10-ball knock from Khwaja Nafe. I don't remember any defensive intent at all. Every ball he's gone after it. Now it's Fakhr. Fakhr was clearing that front leg to go over the offside. He's hit a few sixes like this in this tournament. Yes, once again, but he was not balanced while he was trying to create that position to go over covers.
And Imamul Haq, if you could see what he did on that stroke, was he started in anticipation, he started to run towards covers. And then he had to come back to collect that ball. That was pretty funny. And this is Fakhr smashing one down the ground. Use of the feet, great intent over there. Another boundary to Markhors. Yeah, Fakhr can't be kept quiet for long. Intent is always there. Amir Yamin is not express. Fakhr decided to charge him. Just give himself some room. Stayed leg side of the ball to allow those hands to go through. Flat bats it. Amir Yamin would know that he's in the middle of the battle. These two batters are going after him. Inside edge will earn Fakhr the boundary. Amir would feel there is no justice in the world. Well, Fakhr living dangerously over there. The last 3 balls, he's been risking his wicket every time. Once again, he opens up and then he's in no position to play any sort of stroke over there. Very lucky to survive. He does open up. He does open up quite a lot. Usually it's a small stride inside, but these strides are very big. And he doesn't look balanced while doing that. So there is an exaggerated movement which takes most of his body weight onto the back foot. And then when you want to hit something in front of the wicket, too much weight on the back foot doesn't help your execution. And that is exactly what has happened with Fakhr on these 2 occasions. Yeah, that longer stride, he's almost leaning back. That's how he can't allow the ball or the hands to go through and put any kind of control into the stroke. Even when you do that movement, when you clear your front leg, your head stays into the shot, your weight is into the shot, but when you lean back, you leave yourself in no position. Fakhr not always pleasing on the eye, but mighty effective when he gets going. And that will be the concern of Nurpur Lions. They need to get rid of Fakhr ASAP. As long as he's in the middle, the fielding side will be sweating. He only needs one to come out of the middle and away he will go. This one does come out from pretty close of the middle, but no, straight to the fielder. Shahid Aziz, been the outstanding fielder, was at the right time, at the right place, and Fakhr's knock is ended. Well done to Amir Yamin and to Team Nurpur Lions, the captain taking the field to the exact position where Fakhr Zaman hit it. Flat to the fielder Shahid Aziz, who's been brilliant in this tournament, taking most of the catches coming his way. And another flat one this. And no problems with the foot. Let's have a look at the stroke. There was whole of the leg side open except this one fielder. And how perfectly Fakhr has picked him. Gone for 11. UMT Markhors 26 for 1. First time in the tournament, we're going to have a look at Mohammad Faizan. Very good ball striker. Good to see him back in action. Faizan is an exceptional talent, and I hope that he does justice to it. His current average doesn't reveal the kind of talent that he possesses. Once again, this big shot, it's edged and it's dropped. That's a sitter which has gone down. Musa, what have you done? Did he even get a hand to it? The way he was rubbing his midriff, I think it went through his hands and hit him. But it was an absolute sitter. Well, the opportunity created.
It didn't even hit his hands, went straight into his body. Went through. Well, that certainly is not what is required. This is very ordinary stuff. At this level, you need to take those or any of those. And another one goes down. This time it's the slips. It's Khushdil Shah. Is it too cold for the fielders, Shaji? Well, it appears so. Khushdil Shah was wringing his hands without worrying about retrieving the ball when he shelled it. This is so bizarre. Comedy of errors. 2 and 2 and pretty regulation. Slip catches are never easy, but look at those hands. He was clearly late on it. Well, the bowler would feel hard done by his fielders. One standing alongside him, one standing alongside the keeper, both letting him down. Simple takes. But he has to carry on. Wonderfully bowled. Great follow-up delivery. This is the kind of attitude required of Awais Anwar. He's bowling well. He's generating pace. He's getting the ball to swing. And the fielders, they need to back him. They have 188 to defend, not 288. Look at this. It was an absolute dolly. Doesn't get any easier than this. In slip catches, they say never easy catch, but as far as any regulation catch to slip, good height. He saw it all the way. Batter was off the back foot. Sloppy. But Fajar Nafi lives to fight another day. It was one catch each for both the batters. They have a life each now, and they have got to make it count. As Awais Anwar, he can smile now, but deep down he will feel unlucky. He's bowled really well. He's got the ball swinging. Imam has put the fielders in the right place. Unfortunately for them, both chances going down. This has been lifted. It's a great hit. And this is Fazan for you. This is the talent we were just mentioning, that we hope that he does justice to it. What a great cricketing stroke that is. Great extension of the arms. A full face presented. Minimum of effort and maximum result. The key to this shot, when you see this replay, is look at how strong and solid his base is. Hold the pose. Take a click. That is a sensational strike. Ball swinging, taking height, good bounce in the pitch, good pace, and he comes up with a brilliant stroke. 35 is the score. One ball to go in the fourth over. Lot of action in this over. And once again, good delivery. And there is that frustration as the over number 4 ends. It's 35 for 1. कैचेस पकड़ना बहुत ज़रूरी है. किसी भी फॉर्मेट में आप खेल रहे हो, आप कैचेस नहीं पकड़ेंगे तो मैच जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा. अब मूसा को जिम्मेदारी दी गई है. 52 विकेट्स हासिल कर चुके हैं इस फॉर्मेट में. एक बार फिर चांस है और एक बार फिर कैच छूट गया है. इस बार विकेट कीपर के हाथों. मूसा तो उनके पास आ गए थे सेलिब्रेट करते हुए, और इनके पास तो ग्लव्स भी थे. बदकिस्मती, यहाँ पर एक और आसान सा कैच. इमामुल हक जो हैं खासे बरहम होंगे, गो के इजहार नहीं कर रहे.
इससे आसान कैच नहीं हो सकता। विकेट कीपर के लिए बेशतर कैचेस जो हैं वो मामूल की बात होती है, और ये बिल्कुल उन्हीं में से एक था। तीनों कैचेस की अगर बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चांसेस थे, तीनों ही होने चाहिए थे। एक मूसा ने खुद छोड़ा, एक स्लिप में छूटा और एक विकेट कीपर के हाथों। तो 3 कैचेस जब आप 4 ओवर्स के अंदर छोड़ देते हैं, ये देखिए ये पहला था जो कि मूसा ही फील्डर थे, ये भी आसान है हाथों के दरमियान से, ये स्लिप में रेगुलर कैच, बहुत स्लो बहुत लेजी अटेम्प्ट थी ये खुशदिल की जानिब से। और आखिरी मूसा की बॉलिंग पे रोहेल नजीर ने, तीनों ही कैच तारिक भाई होने चाहिए थे। जहाँ रबी ज़ाहिर है नींद का वक्त भी नहीं हुआ, कुछ देर पहले यहाँ पर शाम हुई है, 1 रन का और इजाफा होगा यूएमटी के लिए, यूएमटी मार्कोर्स के लिए। इतना आसान आगाज नहीं है, हदफ मुश्किल है और अभी तक उनकी बैटिंग में मोमेंटम नज़र नहीं आया। लेकिन अब ये देखना है कि ख्वाजा नाफे और जो फैज़ान है वो कितना फ़ायदा उठा सकते हैं ये मिलने वाली नई जिंदगियों का। और दोनों ही ऐसे बैटर हैं तारिक भाई के किसी एक ने भी फ़ायदा उठाया तो वो मैच एक तरफा कर देंगे, क्योंकि दोनों ही हार्ड हिटिंग प्लेयर हैं, 6 हिटर हैं। जब आखिरी बार नूरपुर लायंस ने शाम के टाइम, रात के टाइम रादर कहेंगे, फील्डिंग की थी तो बहुत शानदार कैचेस पकड़े थे, आज कहानी बरक्स है। लाजवाब कमाल बॉलिंग मूसा की, इस बार उछली रफ्तार भी थी और सब कुछ हुआ मां सिवाय आउटसाइड एज के। कमाल की लेंथ पढ़ने के बाद थोड़ा सीधा ही रहा है, ज़्यादा मूवमेंट देखी नहीं, लेकिन लेंथ बहुत ज़बरदस्त थी मूसा की जानिब से। शानदार कमबैक किया है डोमेस्टिक क्रिकेट में मूसा ने, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी अच्छे रिदम में नजर आए, विकेट्स लेते हुए नजर आए, और अब इस टूर्नामेंट में भी रिदम बहुत कमाल का है, पेस भी अच्छी है। क्योंकि ज़्यादातर राइट हैंडर को ये इन स्विंग करते हैं, 4 फील्डर हैं इस ऑन साइड में, लेकिन यहाँ गेंद गिरने के बाद इनकी अपनी लाइन को होल्ड कर रही है और उसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी फैजान को मुसलसल दूसरी बार भी, इसलिए लाजवाब हो गए। अच्छा, थोड़ी सी आदत ज़रूर है फैज़ान की कि ये दूर के बॉल को खेलते हैं, बाजुओं की मदद से ये खेलना जानते हैं, क्योंकि मजबूत रिस्ट हैं, पंच मारते हैं, इसलिए अक्सर आप इनको देखेंगे कि बॉडी से दूर ये पोक करते हैं बॉल पे। जहाँ ये कंडीशंस ऐसी हैं, यहाँ पर जो है आपको हाथों के साथ साथ पैरों को भी इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत होती है बैटिंग क्रीज पे। एक और तेज गेंद, इस बार भी रन नहीं मिल सकेगा। ये बेहतरीन ओवर, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम। ये मेडन रहा, विकेट मेडन हो सकता था, लेकिन कैच गिरा 36 पर 1। अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे उवैस अनवर, उठाकर मारने की कोशिश की, सही तरह टाइमिंग नहीं मिली, प्लेसमेंट भी अच्छी नहीं थी ख्वाजा नाफे की। बाउंड्रीज इनको इतनी आसानी के साथ नहीं मिल रही, तो इसलिए इस वक्त ये शॉट जो है ये क्रिएट करने के लिए कोशिशां हैं। यहाँ जोरदार तरीके से खेला था ये शॉट, इस पर अच्छी फील्डिंग की है इमामुल हक ने। काश वो सोच रहे होंगे कि हर जगह मैं ही खड़ा हो जाऊं, क्योंकि अच्छे फील्डर्स में शुमार होता है इमामुल हक का भी। अच्छा फॉलो किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं।
फील्डर पहुंचे, जल्दी करना होगी और यहां पर पहुंच गए हैं ऐसा लगता है। विकेट कीपर की जानिब से खातिर खा एक्साइटमेंट नहीं थी। स्प्रिंट तो अच्छी लगाई थी लेकिन थ्रो थोड़ा सा विकेट से दूर था, इसलिए दूर से पकड़ के स्टंप्स की तरफ लाना था बॉल को। रोहेल नज़ीर ने तीसरे अंपायर को रजू किया है। अंपायर ने देखना होगा कि कैसा ये फैसला है। ओह, ये करीबी मामला हो सकता है, करीबी मामला हो सकता है ये। यहाँ करीबी से ही आगे की बात है। यहाँ पर बेल जो हैं वो हवा में हैं और ये पीछे रह गए हैं। शायद ये डाइव करते तो ये पहुंच सकते थे। यह बहुत ही अच्छी थ्रो थी, डीप मिड विकेट बाउंड्री से सीधी आई विकेट कीपर की जानिब और आखिर में ये विकेट का नुकसान उठाना पड़ा ख्वाजा नाफे, जिन कैचेस गिरे थे। अब वापस जाएंगे, ज्यादा जारहाना रनिंग का शिकार हुए। ख्वाजा ने बनाए 16, 36 पर 1। बस मंजर बिल्कुल धुंधला सा गया है रावलपिंडी स्टेडियम का भी, यूएमटी मार्कोर्स की बैटिंग का भी। ऐसे में इफ्तिखार अहमद मैदान में उतरे हैं, टीम के कप्तान जिन्हें ज़्यादा जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। और ज़्यादा जिम्मेदारी रनिंग बिटवीन द विकेट्स में लेने की भी ज़रूरत है। 5226 रन, 130 की स्ट्राइक रेट है, एक सेंचुरी और 33 निस्फ सेंचुरियां बना चुके हैं इस लेवल पे। तो जो आखिरी 4 इनिंग्स इन्होंने इस ग्राउंड में, इस टूर्नामेंट में खेली हैं, उसमें 3 में ये रन आउट हुए हैं। इस चीज़ का भी प्रेशर होगा, जैसे अब दोपहर में बात भी हुई उनसे, उनके जहन में ये बात बराबर है कि अब इस बार रन आउट नहीं होना चाहते हैं वो। लेकिन दाद देनी होगी आखिरी एफर्ट की, जिस तरीके से कॉम्बिनेशन था एक थ्रो का और अच्छी विकेट कीपिंग का। तेज थ्रो आई लेकिन थोड़ा विकेटों से दूर जरूर थी, जिसको कवर किया रोहेल नज़ीर ने। 2 रन की कॉल की थी, बैकफुट पे थे, बैलेंस थोड़ा कंफ्यूजन भी हुई बीच में। और ये देखिए थोड़ा सा दूर से बॉल पकड़ा, थ्रो तेज थी। अच्छा काम यहाँ पे विकेट कीपर और फील्डर दोनों की जानिब से। फिर से स्किट करती हुई आई, पैड्स को हदफ पर रखने के लिए कोशां थे। यहाँ पर उवैस अनवर नए आए हैं इस टीम में। हमने मोहम्मद सलमान को देखा था शुरू के दिनों में, एक और फास्ट बॉलर थे। तो यहाँ शायद अजीज हैं इस टीम में। तो कुछ बताइए इनके, थोड़ा सा हमें गहराई में लेकर चलिए, इनके जो बॉलिंग टैलेंट है उसके बारे में। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है इनका जो कद है वो बहुत बेहतर है फास्ट बॉलिंग के लिए। और इन कंडीशंस के ऊपर जैसे ये पटकते हैं बॉल आके, ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। मजीद बात करेंगे कलाइयों के इस्तेमाल से। इस बार एक ही रन है, बहुत मोहतात होंगे इफ्तिखार अहमद, 3 रन आउट्स हो चुके हैं, एक बार और नहीं चाहेंगे कि वो हों। तो ये अच्छे प्रोस्पेक्ट लगते हैं, अच्छा रनअप है, एक्शन बहुत अच्छा है, हाई आर्म एक्शन है और पटकते हैं बॉल आके पिच के ऊपर, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा इनको बाउंस भी मिलता है और इन कंडीशंस में तो सीम मूवमेंट भी मिलती है, इसलिए अच्छा प्रोस्पेक्ट है। और अभी ये नहीं भूलना चाहिए कि नूरपुर लायंस के पास अहमद दानियाल भी मौजूद हैं, जो कि अभी अनफिट हैं, लेकिन वो आने वाले मैचेस में हमें एक्शन में नजर आएंगे। तो अच्छे फास्ट बॉलिंग यूनिट है नूरपुर लायंस का। फील्डर वाइड स्लिप पर मौजूद इफ्तिखार अहमद क्योंकि नए आए हैं।
अच्छा खेलते हैं ये पेस बॉलिंग को। इफ्तिखार अभी उन्हें कुछ वक्त लगेगा बड़े शॉट्स खेलने से पहले। 6 ओवर्स के बाद 39 पर 2। अच्छे ओवर पे अगर नजर डालें तो अच्छा आगाज था फखर जमान और ख्वाजा नाफे की जानिब से। काफ़ी बाउंड्रीज देखने को मिली हमें। फील्डिंग लैप्सेस भी फखर जमान तगड़े लग रहे थे। अच्छा सॉलिड आगाज किया था लेकिन किस्मत ने भी साथ दे रही थी, लेकिन ज़्यादा देर कुछ कर नहीं सके। एक बड़ा शॉट खेलने गए और आमिर यामीन के हाथों उनकी विकेट गई। फैजान का कैच ड्रॉप हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या कमाल का शॉट खेला। ये इनके ट्रेडमार्क शॉट है जो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलते हैं। ख्वाजा नाफे को भी एक जिंदगी मिली। बहुत ही आसान कैच छूटा लेकिन ज़्यादातर उसका फ़ायदा उठा नहीं सके और एक शानदार टैग टीम एफर्ट से रन आउट हुए और अपनी विकेट गंवाई पावर प्ले के इख्तिताम पर। ये जितना ज़्यादा हम इनको करीब से देखते हैं और ज़्यादा सईद अनवर की याद आती। अच्छी बैटिंग पिच है, आप यहाँ पर खेल सकते हैं शॉट थ्रू द लाइन भी, बैकफुट पर भी। ट्रू पिच है और अच्छे इंतजामात हैं इस बैरिया टाउन पाकिस्तान चैंपियंस कप के मौके पर। तमाशाई जो हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज इतवार का दिन था, दिन भर यहाँ खासी रौनक रही। खासे बड़े बड़े बाहर बैनर्स लगे हुए हैं स्टेडियम के आसपास, मरी रोड पर भी, इस्लामाबाद जाने वाले रास्तों पे। इफ्तिखार फिर प्लेस करना चाहते थे लेकिन वहाँ शारून ने बर वक्त आकर इसका रास्ता रोका। जहाँ एक इम्पॉर्टेंट इनिंग है ये कप्तान इफ्तिखार के लिए। अभी तक ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन अपॉर्चुनिटी अच्छी है। यहाँ टीम को भी ज़रूरत है। 148 रन अभी भी बनाने हैं। स्लिप ले रखी है इफ्तिखार के अगेंस्ट। ये सर्द चांदनी और पुल शॉट खेला, पामाल किया इफ्तिखार अहमद ने। और अब यहाँ गेंद जो है ये टिपा खाए बगैर गई है या फिर ये पहले पड़ गई स्कर्टिंग के। अंपायर आखिरी फैसले से पहले टीवी अंपायर की मदद लेंगे। ऐसा लगता है कि ये 6 होना चाहिए। बहुत अच्छी तरह टाइम किया इफ्तिखार अहमद, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। हमेशा की तरह शॉर्ट गेंद पे। जहाँ उन्होंने कहा होगा कि स्लिप आपने जरूर ले रखी होगी लेकिन आप जोन में करेंगे तो मैं नहीं बख्शूंगा। ऐसी बैटिंग करते हैं ये। एक बार फिर ये सीटियां बजाती हुई गई, इस बार ज्यादा दूर तलक। इफ्तिखार अहमद उन्होंने तहलका मचा दिया है बैक टू बैक छक्कों के जरिए। जी हाँ, और क्राउड जो कि सिर्फ इनको देखने आया हुआ है, क्योंकि जब ये बैटिंग करने आए थे तो सबसे ज्यादा शोर मचा था और क्राउड को एंटरटेन करते हुए आप कहेंगे खराब बॉल, उनके जोन में बॉल कर दिया। वो तैयार थे, अच्छा बैलेंस, अच्छा लिफ्ट, अच्छा स्विंग और अच्छा रिजल्ट भी इफ्तिखार और टीम के लिए। ये खतरे की घंटी हो सकती है नूरपुर लायंस के लिए। इफ्तिखार जिस मूड में बैटिंग करने आए हैं। मूसा के पास अब क्या जवाब होगा इसका। बेहतर डिलीवरी थी, निस्बतन लेंथ से आई। इन 2 शॉट से वो जो बढ़ती हुई दरकार औसत थी जो 11 को छू चली थी,
उसको कुछ काम किया है। बहुत लंबा सफ़र, मुश्किल सफ़र है। और ये पहला शॉट और उसके बाद मुसलसल दूसरा जो दबाव कम करने का बाइस बना। जो इसके बावजूद अभी भी जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 10 से ऊपर ही है। 10.33, 136 रन अभी भी बनाने हैं, तो उसके लिए इफ्तिखार का खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है यूएमटी मार्कोर्स के लिए। काफ़ी पीछे थे मिड विकेट पर खुश दिलशाद। इस ओवर से आए 2 छक्कों की मदद से 13, 52 पर 2। थोड़ा बाहर हो जा प्लीज। ख्वाजा नाफे और फ़खर जमान आज ज़्यादा मुतासिर नहीं कर सके, इसलिए मिडल ऑर्डर को आज ज़्यादा बड़ी इनिंग्स खेलना होगी। लेफ्ट आर्म स्पिनर जुनैद आएंगे, पहली बार खेल रहे हैं नूरपुर लायंस के लिए। अच्छे क्रिकेटर हैं, ऑलराउंड क्रिकेटर, बाएं हाथ से स्पिन बॉलिंग करते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं ये कोयटा से, बलूचिस्तान से अच्छी नपी तुली बॉलिंग करते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स की भी शर्ट में नजर आए थे, बहुत पहले की बात है। अच्छे प्रॉस्पेक्ट हैं ये भी। एक इनिंग मुझे याद है इनकी जो उन्होंने स्टेट बैंक ग्राउंड में खेली थी स्टे क्रिकेट में, 5 विकेट्स भी लिए थे और 70 से ऊपर रन्स भी बनाए थे, तो एक अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर हैं। लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारी है इन पे, क्योंकि 2 ऐसे बैटर्स को बॉलिंग करना है तारिक भाई कि जो बुरे बॉल को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और अच्छे बॉल पे भी हिट मारने का पोटेंशियल रखते हैं। इसलिए आपको नपी तुली बॉलिंग करनी होगी, विद इन द स्टंप्स बॉलिंग करनी होगी, पेस को वेरी करना होगा, तो इसलिए आसान नहीं होगा यहाँ पे इन दोनों को बॉलिंग करना। खुद को शॉक कराने चले गए थे, चेक ड्राइव। ये 5 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं जुनैद ने, और इस सीजन में जैसी इंग्लैंड के खिलाफ पिचेस तैयार हुई थी, जितने भी फिंगर स्पिनर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में, उनको एक नई उम्मीद की एक शम्मा नजर आई है। आने वाले दिनों में टेस्ट क्रिकेट में डिमांड बढ़ेगी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की। आगे चलकर पाकिस्तान में जब और ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट का इनेकाद होगा, तो अब ज़ाहिर है पाकिस्तान ने इस चीज़ को हथियार बनाना है, क्योंकि इंग्लैंड जैसी बड़ी ताकतवर टीम को पाकिस्तान ने शिकस्त दी है बड़ी आसानी से आखिरी 2 टेस्ट मैचों में, और ये बड़ा कामयाब हरबा था। ये बहुत देर बाद आजमाया गया, लेकिन दुरुस्त आजमाया गया। जैसे आप खुद ही कहते हैं कि देर आए और दुरुस्त आए, और ज़रूरत भी थी इस चीज़ की कि आप अपने कंडीशंस को आइडेंटिफाई करें, आपको खुद से पता हो कि क्या कंडीशंस हैं, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंगली तैयारी की जाए। आधा रोका है, हाथ जरूर डाला है, बड़ी दिलेराना एफर्ट कहेंगे इस सर्दी में, जिस तरीके से इमामुल हक ने इस बॉल को आधा रोका है। 8 ओवर्स गए, 58 पर 2 यूएमटी मार्कोर्स। Well, it's going to be a good contest. 58 for 2, UMT Markhors. Hostel now in attack.
Iftikhar is looking solid with 2 maximums right out of the middle of the bat. It's not going to be easy to keep him quiet. Right on target from Khushdil. Well, UMT Markhors, they need their skipper to be out in the middle if they want to chase it down, Shah Faisal. Yes, indeed. It has to be Iftikhar to guide them from here. The required run rate is up above 10 already, touching 11. Oh, this is gone. Is it long enough? Sure it is. When Iftikhar goes big, it generally lands outside of the park. That was a loosener from Khushdil Shah, just tossing it up outside off stump. You cannot ball those to Iftikhar. You're asking for trouble. Again, just an easy path for him to clear his arms down on one knee. And sailed over the boundary. This time a bit quicker. The length was slightly shorter, giving no room to him, but you have to be very precise bowling to skipper of UMT Markhors. Well, crowd have found their voice as soon as Iftikhar has entered the field. Definitely a crowd's favorite. Wanted a single Iftikhar, denied by Faizan. Excellent, excellent, Khushi bhai. He's eager to come back on strike. 14 deliveries, 23. That is the sort of innings you would expect from him. Oh, Well bowled, trying shabash. to guide it towards third. Excellent, excellent, Clever Khushi change of bhai. pace from Khushdil. Slightly slow that one. Faizan almost went through the shot a bit early. Well bowled, yaar. Well bowled, yaar. Great over. Khushdil Shah with the angle, Faizan playing him down the ground for a single. He's been handy with bowling, Khushdil as well. Picked up 2 the other day, giving 26. 9 gone, UMT Markhors 66 for 2. Full moon it is. Beautiful sight. Junaid to continue. Cheeky on that occasion, Faizan. He's a proactive batter there, and it will reach to the boundary. Great execution from Faizan. You've seen a lot of players try these dinky shots. Ye theek hai, shabash. Percentage of execution is not great, but on that occasion, Faizan got himself into position very quickly. The key is Ye acha tha, Junaid. how he got himself into position and then just back flicked it up over his head almost. Went right over the right shoulder of Rohail Nazir. Imi bhai, well done, No Junaid. one there. Imamul Haq at the receiving end. It's important for Faizan to keep on rotating strike. Just don't let that run rate climb up. Slammed hard. Wasn't from the middle of the bat. And good fielding by Hassan Nawaz, keeping them down to 1. Well done, Hassan. He's mixing it up now. Improvisation now, use of the feet. Have a look at this. He got himself onto his knees. More of a Dil scoop. Just right behind the wicket keeper. Well bowled, Juni khud hi jayega. Out ho Spin gaya. into the gap on the onside for a single. That will make it Bahut achhe, Junaid. into a very good over for the UMT Markhors. Still going strong. 72. That run rate has gone up above 11. Junaid. They have to keep up with that. Boundary in every over probably is the order of the day. Well bowled, yaar. Well bowled, Good Junaid. bowling from Junaid, keeping things tight. Flatter trajectory, Excellent, shabash. giving no room whatsoever to Faizan and neither to Iftikhar. But they will need a big innings from their skipper, UMT Markhors. 115 required of 61. Niklenge. Slightly creeping up the required run rate.
Down he goes. And he goes big. Iftikhar is putting up a show for the audience. Up on their feet are the crowds. This one landing in the arc, right in the slot for Iftikhar. And he sends it soaring once again at the halfway stage. UMT Markhors 79 for 2 and time for drinks. Well, here's how the chase is going under. UMT Markhors openers couldn't really contribute much, but Faizan and Iftikhar, these two are crucial for this chase, especially Iftikhar. The 16 deliveries, 30 already on board with some huge sixes. This one off the back foot. Started off well with the boundary. That one went further in the zone and he middled it. Tossing it outside after Khushdil was punished down the ground. Even bigger on that occasion. He's turning the show on. He needs to do it for a lot longer. Got a huge target to chase. Amir Yamin with the wicket. Awais was mighty impressive but very unlucky. It's not middle it and just pulled out of it. Seemed like for a moment that Awais might go for the catch. They need to pull out something special to break this partnership of 43 already. Awais Zafar patrolling that region. Khushdil, the man with the golden arm. He was ready to go big, wasn't he? Flatter trajectory and a good length by Khushdil on that occasion. Don't think Khushdil will throw anything up to Iftikhar. This is shorter, little bit of turn and grip for Khushdil. This is a battle of cat and mouse here. These are a couple of big hitters, and if they stay for the next 5 to 6 overs, they'll get that run chase on target. That is for sure.
Two is the call. The fielder on the boundary, a fumble that allowed an easy couple. Well, they need to pull up their socks. Amir Yamin on that occasion. 5 bowlers has been used. They still got Shahid Aziz, the 6th bowler option. Straight up in the air. Fielder slightly delayed to react. Awais Zafar on that occasion, I don't think he picked it up. It's a foggy evening in Rawalpindi. These lights are pretty low as well. And Awais did give the impression that he didn't pick the ball immediately. He ran in hard, got to the ball, but couldn't hold on to it. Another opportunity went to begging. Good bowling, good recovery from Khushdil. Just a single to end the over. Has kept things down. 11 gone, UMT Markhors 85 for 2. Yes, it is chilly out, but they're all enjoying the live action by Faizan and Iftikhar in particular. This was the last one. In the previous over, chance given, late to react, he didn't pick it up. Awais tried his best. Has been a chilly evening here, not easy conditions. Now Shahid has been brought in attack for the first time. Shahid Aziz was decent with the ball the other day, picking up 4 wickets. He's a skiddy bowler, a wise operator as well. Economy of 8.77. Iftikhar, he's well settled in. He knows where the fielders are and he was ready for it. Welcome, Shahid Aziz. 2 straight on that occasion, but what timing was that from Iftikhar? Just helped it on its way with the inward angle and the pace of Shahid Aziz. Par wants to have another look. It clearly went over. So that will be a maximum. Yet another one for Iftikhar. But the timing was sublime. He didn't spend an ounce of energy on that. Just let the ball roll off the face of the bat. Slammed hard towards the offside. Oh, misfield. Things are turning up for UMT Markhors. Well, look at that. The fielding effort not good enough. I think it was young Shahzeb. The ball skidding off the surface. It's a bit greasy now, but timing was superb. You would expect Shahzeb, who actually overran it, and the ball was behind him in the end. Iftikhar rollicking along. Change of pace. Pushing hard for the second one. It's not available. Iftikhar moves on to 43. Partnership of 59 now of 37 deliveries. Well, he had some trouble in previous innings. Ran himself out. But not today. He's making sure of it. No, Kamran may correct me. He hasn't been dismissed by a bowler in this tournament. All his 3 dismissals have been run outs and 1 not out. And that was 42. He's gone past that now. But he needs to keep going for a lot longer. Long on, long off goes back for Faizan. Oh, denied the run there. Lucky for Faizan. Shahid did slip. Otherwise, it might have been a run-out opportunity there. Well, Iftikhar was also stranded. It's just that when Shahid collected the ball, his direction was more towards the striker's end. This is where he tried. Have a look at this running.
Iftikhar was going back. He remembered what happened with Samad the other day. Oh, it's all happening. Yes, the batter, you do need to wait for the ball to cross the bowler. Again, good change of pace. That's smart bowling from Shahid. He went for runs. 11 already in this over. He needs to close cleanly now. Yeah, 6 and a 4, but then he's made a good comeback. Right on cue this over for UMT Markhors. They need just 11 or slightly above 11 in every over. They got it for that over. And with 1 to go, they can make it into a real big one. Will Fazan target a boundary? Good bowling, right in the block hole. They're pushing hard for the second one, and they've made it. Maybe looking for the third. They weren't ready. It's all happening in the field. 2 to end the over. 12 overs gone, UMT Markhors, 96 for 2. एक बार फिर आपको उर्दू कमेंट्री बॉक्स में खुशामदीद कहते हैं। 8 ओवर्स का खेल बाकी रह गया है। 11.2 की औसत दरकार है। इफ्तिखार आज बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और इस पर तो ये है कि अच्छी रनिंग भी कर रहे हैं। फैज़ान ने उनका उम्दा साथ दिया, जिस वजह से वो अपनी टीम को बराबरी पर ले आए इस मैच में। सलमान भट्ट कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ हैं। जी हाँ, यहाँ पर कुछ राहों में दुश्वारी और कुछ अपनी गलतियाँ, और इफ्तिखार आज किसी और मूड में है। बड़ा छक्का, शानदार शॉट, और खुशदिल सिर्फ मुलाहिजा कर सकते हैं इसको। फील्डर्स ने आज अपनी बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किया है, लेकिन इफ्तिखार किसी मौके को जाने नहीं दे रहे, और यही कुंजी है इस रन चेस की। ये देखिए एक बार फिर इस बड़े शॉट का मंजर। और शॉट गेंद, इससे बैकफुट पर कट किया बेहद जोरदार अंदाज में। 50 रन मुकम्मल किए कप्तान ने। 6 छक्के उन्होंने लगाए, उनकी 34वीं निस्फ सेंचुरी इस फॉर्मेट में। ये वो इफ्तिखार अहमद हैं जो महसूस किया करते हैं हम सबको। विंटेज इफ्तिखार, क्या कहने आज कप्तान के। 25 गेंदें, 53 रन और अभी भी विकेट पे मौजूद। लेकिन ये टारगेट ऐसा है कि इन्हें थोड़ा और खेलना पड़ेगा अभी। आज एतमाद जो है वो भरपूर है। कदमों का इस्तेमाल, चाहे खड़े होके मारें, घुटना टेक के मारें या कट मारें, सब कुछ आज इनके लिए हो रहा है। लेकिन इधर पता नहीं किस बात की टेंशन है। शॉट लॉन्ग ऑन पर वैस अनवर हैं। यूएमटी मार्कोर्स ने बड़े दिलचस्प मैचेस खेले हैं इस टूर्नामेंट में, जिनमें से एक उन्होंने 3 रन जीता था। उनकी बैटिंग में बड़ी डेप्थ है। आज बिलावल भट्टी 9वें नंबर पर आएंगे। ये उम्दा शॉट खेला, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया, और इस पर तुर्रा प्लेसमेंट भी थी। फैज़ान जो इससे पहले इफ्तिखार की बैटिंग से महसूस हो रहे थे, इस बार उनने भी गेंद को चलता किया। 113 पर 2। ये इफ्तिखार अहमद के
50 रन्स। अब देख सकते हैं खड़े खड़े भी छक्का लगा लेते हैं, तो वही करके दिखाया मुसलसल 2 बार स्पिनर पे भी। कट शॉट इनका फेवरेट है। आज 6 छक्के इन्होंने लगा दिए इस शाम। शाहिद अजीज आए हैं अटैक में और इन्होंने इस टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग की है और बहुत सारे अच्छे कैचेस भी लिए हैं इन्होंने। और यहाँ पर इनकी कोशिश होगी कि इस विकेट को हासिल किया जाए क्योंकि रन्स अभी भी काफ़ी पड़े हैं। एक स्लोअर वन, इसको सीधा पॉइंट की तरफ खेला। ऐसे मौक़ों पर एक कप्तान की तरफ सब देखते हैं कि कप्तान क्या करता है, क्या हिकमत अमली होगी। और जो हो रहा है अंदर, इससे ऐसा लगता है कि जैसे एक तसलसल सा बना हुआ है, एक मोमेंटम बरकरार है जिसमें फील्डर्स भी गलतियां कर रहे हैं और बैटर्स की शॉट्स लग रही हैं। तो बहसियत कप्तान आप मोमेंटम को तोड़ना बड़ा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे टीम को 30, 35, 40 सेकंड के लिए इकट्ठा किया जा सकता है, थोड़ी सी बात पेप टॉक दी जा सकती है जिससे यकीनन मोमेंटम में फ़र्क पड़ता है। एक और छक्का। जनाब जो मर्जी कर लीजिए, आज इफ्तिखार का रुकना मुश्किल है। यहाँ ये अच्छा हुक शॉट था और ओवर द विकेट जो एंगल था उससे भी उनकी मदद हुई। बिल्कुल ज़मीन पर गेंद को रखने की कोशिश नहीं की इफ्तिखार अहमद ने। गेंद ज़्यादा बुलंदी पर जाती है यहाँ रावलपिंडी स्टेडियम में, क्योंकि ये हम समंदर से बहुत दूर हैं, सैकड़ों फुट की बुलंदी पर। और फिर से उठा खेला और ये गजब का शॉट, फलक बोस छक्का इफ्तिखार का। और ये गेंद हमारे कॉम्बॉक्स से ऊपर से आई चली। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा, शानदार टाइमिंग और बड़ा छक्का। इफ्तिखार आज बिल्कुल ही एक और मूड में है, ये देखिए। और बॉलर भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। फाइन लेग ऊपर है तो बाउंसर कर दिया स्पेस पे, और अगला बॉल वो ओवर कंपनसेट बिल्कुल आगे, जिसको इफ्तिखार जैसा प्लेयर और इतना तजर्बा रखने वाला प्लेयर तकरीबन उसको पता होता है कि क्या होने लगा। और कट किया हाथों में, और यहाँ कोई गलती नहीं की। वहां पर हुआ है सनवर, जिनकी गेंदों पर मुसलसल 2 कैचेस गिरे थे, गेंद उनके हाथ लग गई। और ये कीमती विकेट है इफ्तिखार अहमद की। मिसबाह फिक्रमंद हुए हैं, और क्यों ना हूं, जिस तरह इफ्तिखार खेल रहे थे उन्होंने खेल का पांसा पलट दिया था। लेकिन क्या ये टर्निंग पॉइंट होगा एक और इस मुकाबले का? जी हाँ, ये बड़ा क्रूशल विकेट, क्योंकि इफ्तिखार ही थे जिन्होंने इस रन रेट को इतना उठा के रखा हुआ था, और आखिरकार दूसरे अटेम्प्ट पर ही सही लेकिन कैच करने में कामयाब हुए अवैस। और इफ्तिखार को एक शानदार बारी के बाद जाना होगा। इस मैच में जान डाली इन्होंने, 66 रन 31 बॉलें, और यूएमटी मार्कोर्स 125 पे 3। अगर हम यूएमटी मार्खोर्स की टीम का जायजा लें तो खासी बैटिंग अभी पीछे पड़ी है। अब्दुल समद, मोहम्मद नवाज, साद मसूद ने पिछले मैच में शानदार 60 रन किए। बिलावल भट्टी अच्छी खासी बैटिंग करते हैं, और ये बड़ा अच्छा शॉट, लेकिन मिड विकेट के फील्डर इसकी राह में मौजूद और इसको एक ही रन पे रखेंगे। मेरा ख्याल है कि 10 रन की एवरेज अच्छा पिच है। जिस तरह इफ्तिखार खेल कर गए हैं, यहाँ से
बहुत मुश्किल होनी नहीं चाहिए इस मैच में। और यहाँ ज़रा सी मुश्किल हुई थी वैस अनवर को, क्योंकि गेंद तेज गई थी, शॉट थर्ड पे मौजूद थे, रिबाउंड पर नुमदा कैच लिया। ये अभी तक इनको नाकाबिल यकीन लग रहा है कैच। फैजान पुल करने के लिए गए, इनके पास भी स्ट्रोक्स की कोई कमी नहीं है मोहम्मद फैजान के पास। तो बिल आखिर ये कामयाब ओवर खत्म हुआ शाहिद का 126 पर 3। बासठ रन चाहिए हैं यूएमटी मार्कोर्स को। इमाम भाई वो बाकी सही मतलब है। 6 ओवर्स में खुशी भाई देख लो। खुश दिल शाह आज उनको विकेट हासिल नहीं हो सकी। शायद अजीज आमिर यामीन ने विकेटें हासिल की हैं। अच्छी डिलीवरी, यहाँ विकेट कीपर ने बेल्स उड़ाई लेकिन पांव क्रीज के अंदर ही था। कई बार क्रिकेट में ऐसा होता है कि एक बैटर बहुत अच्छा खेलता है और बॉलर्स बेबस लगते हैं, और जैसे ही वो आउट होता है उसी पिच पे टर्न शुरू हो जाता है, उसी पिच पे बॉल सीम होना शुरू हो जाता है। प्रेशर क्या क्या कुछ करवाता है प्लेयर्स से। ये बड़ा शॉट है कवर्स के ऊपर से, बैक फुट के ऊपर, और अच्छी फील्डिंग वहां पर। लेकिन ये रनिंग अच्छे दर्जे की नहीं है, क्योंकि यहां पर 2 रन तो बनने चाहिए थे, एक ही रन बना है। और आमिर यामीन थे फील्डर। खासा टाइम था बैटर्स के पास। ये देखिए गैप में शॉट था और आमिर यामीन को अपने दाएं तरफ भागना पड़ा, और एक दफा फंबल भी किया उन्होंने बॉल को, उसके बावजूद एक ही रन बना। हाँ, ये अच्छी हिट फ्लैट बल्ले के साथ खेला यहाँ पर फैजान ने, और उन्होंने इस शाम का अपना पहला छक्का लगाया। दरअसल दूसरा, पहला ये स्पिनर पे था। इस ओवर का भी, क्योंकि अभी गेंद बाकी है, कुछ भी हो सकता है। ये वाला डीले वाला अच्छा है। अच्छा बल्ला चलता है इनका, ये वाला अच्छा है। अच्छी खासी रीच है। वाइट बॉल क्रिकेट के रस्सियां हैं, लाहौर कलंदर्स के लिए भी खेल चुके हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टेप बॉल क्रिकेट खेलते हुए आए हैं तो शॉट्स की बहुत आत है इनके पास। सेंट्रल पंजाब के लिए भी एक दौर में खेले थे। ये जोरदार अपील है और अंपायर ने उंगली उठा दी। जाना होगा यहां पर सरवर अफरीदी को। 2 रन पे स्वीप करना चाहते थे, बल्ले का किनारा लेते हुए बॉल, और इस बार अच्छा कैच विकेट कीपर का रोहेल नजीर यकीनन बेहतरी की तरफ गामजन। और ये 2 कैचेस के साथ अब 2 झटके लगे हैं यूएमटी मार्कोर्स की टीम को, और प्रेशर जो है वो शिफ्ट हुआ इस मैच में। ये देखिए इस आउट का मंजर। इस तरह के कैचेस आसान नहीं होते। बहुत अच्छा कैच। जी हाँ, और ये विकेट खरीदी है, गेंद को खासी हवा दी और पहले ही बल्ला अपना घुमा गए थे सरवर आफरीदी, सिर्फ 2 रन बना सके। तो विकेटें इससे पहले भी गिरी थी जोड़ों में, और इस बार भी 134 पर 4। वो जा रहा है ना, ये चलो चले जाओ चले जाओ चले जाओ, आप ऊपर आ जाओ या उधर चले जाओ। इससे किस टीम के खिलाफ स्टार्ट किया था? बाहर है बाहर है। साद मसूद है नए आने वाले बैटर, और
यकीनन पिछले मैच में इनके कारनामे देखकर इनको प्रमोट किया गया है। बड़ी अच्छी कारकर्दगी थी इनकी, बहुत शानदार टेम्परामेंट के साथ वो इनिंग खेली। जब ये क्रीज पर आए थे तो 77 पे 7 खिलाड़ी आउट थे और 39 गेंदों में 63 रन बनाए और अपनी टीम के स्कोर को 160 से पार ले गए। और आज यकीनन मेंटोर मिसबाह हक इनसे वही उम्मीद लगाए बैठे हैं। और टाइम किया लॉन्ग ऑन, लेकिन गेंद उनसे बाला बाला गई। फैजान फिर बाउंड्री को आसानी के साथ क्लियर करने में कामयाब रहे। तो ये शो अभी खत्म नहीं हुआ। बहुत ही शानदार क्रिकेट शॉट, फुल फेस ऑफ द बैट और कलाइयों को और बाजुओं को बड़ा शानदार इस्तेमाल किया। ये देखिए, और पोज होल्ड किया अपना। बेहतरीन शॉट। सबसे खूबसूरत चीज इनका बैलेंस था क्रीज पर। ये पुल शॉट इस बार सीधा फील्डर की तरफ और ओवर का आगाज में जब बाउंड्री लगती है तो पूरा ओवर बॉलर पे प्रेशर रहता है और यकीनन यहाँ पर अपने लिए थोड़ी आसानी की फैजान ने। 140 रन पर है मारखोर और 48 रन मजीद दरकार है और 28 गेंदें बाकी हैं। विकेट्स लेते रहना पड़ेगा नूरपुर लायंस की टीम को। साथ के लिए इस वक्त बैकवर्ड पॉइंट है, कवर, मिड ऑफ, ऑन साइड में शॉर्ट फाइन लेग। अपना पहला रन उन्होंने हासिल किया, गेंद पॉइंट के सामने धकेला। वैस निस्बतन डीप थे। जी हाँ, नए बैटर आए हैं और जाहिर है वो स्ट्राइक को रोटेट करेंगे, यही वक्त का तकाजा है। और हमने देखा कि यही फ़र्क था साथ का बाकी प्लेयर्स से पिछले मैच में। और बैरिया टाउन जो कि अब आलमी सतह पर अपनी डेवलपमेंट ले गया है, दुबई साउथ में वर्ल्ड क्लास कम्युनिटी है, गेटेड है। तारिक भाई, यहाँ लेना है प्लॉट आपने? टाइम किया इसे और गेंद हवा से बातें करती हुई गई। स्टैंड से भी आगे का मामला रहा और ये सरासर टाइमिंग थी, बिल्कुल इसमें कोई सर्फ नहीं की गई। निहायत ही शानदार स्ट्रोक, जितनी तारीफ की जाए कम है। फैजान ने कलाइयों के साथ मुझे लगता है अभी तक टूर्नामेंट का ये सबसे बड़ा छक्का मारा है और एफर्टलेस। ये देखिए क्या बात है। और एक बार फिर आप बैलेंस देखिए और स्टिल देखिए बॉडी कितनी है। परफेक्ट एग्जीक्यूशन है ये बड़े शॉट की और गेंद को पहुंचा दिया सीढ़ियों में। T20 क्रिकेट में ऐसे शॉट्स भी खेले जा सकते हैं। इफ्तिखार के जाने के बाद इन्होंने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और उसके बाद से जब से इफ्तिखार आउट हुए हैं, तीसरा छक्का लगाया ये फैजान ने। और इस मैच में कहीं भी उन्होंने रन रेट को आगे बढ़ने नहीं दिया, बल्कि थोड़ा नीचे ही लेकर आए हैं। तो ये शानदार बैटिंग है। अर्ली ऑन इन्हें चांसेस ज़रूर मिले, लेकिन ये अब उसको पूरा कह लीजिए कि जिम्मेदारी के साथ चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं और अपनी टीम को इन्होंने एक अच्छी पोजीशन में रखा हुआ है। आज मोहम्मद शहजाद की जगह पर मोहम्मद फैजान को इनकी शमूलियत हुई थी। इफ्तिखार अहमद के साथ इनकी पार्टनरशिप बेहतरीन थी। इफ्तिखार अहमद आज बहुत बदले बदले नज़र आए। पिछले 3 मैचेस में रन आउट हुए थे और आज उन्हें दौड़ने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। ऐसा लगता है उन्होंने फैसला कर लिया था कि आज दौड़ना नहीं है, आज सिर्फ छक्के चौके लगाने हैं और भरमार कर दी उन्होंने इसकी। 31 गेंदें, 66 रन, 212 का स्ट्राइक रेट और एक शानदार नॉक। और इसकी ज़रूरत भी थी कि कोई बैटर आके इस तरह खेले इस चेस के अंदर। और इनके जाने के बाद ये बेड़ा उठा लिया है फैजान ने। बेहतरीन T20 बैटिंग कप्तान की तरफ से। और मोहम्मद फैजान जो हैं अब उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं।
1 रन उन्हें दरकार निस्फ सेंचुरी के लिए। और यही रही, इस बार कवर्स को पीछे पाया और भाग खड़े हुए और अपने शानदार 50 रन मुकम्मल किए फैजान ने। फैजान ने अपने 50 रन मुकम्मल किए। एक आउटस्टैंडिंग नॉक है ये और इनका पहली बारी है ये इस टूर्नामेंट के अंदर। शहजाद की जगह टीम में आए और लगता है कि अब यही रहेंगे इस जगह पर इस टूर्नामेंट में। ये तेज बाउंसर था और मूसा जिस पेस के लिए जाने जाते हैं तो इस तरह का रिस्पांस इनकी तरफ से आप इसकी तवक्को कर सकते हैं, लेकिन साद ने उसको बड़े बेहतरीन तरीके से जाने दिया। 16 ओवर्स का इख्तिताम, 149 पे 4। They've been neck to neck, the firm, blue and red. As UMT Markhors now required 39 runs of 24 deliveries. What a knock. Not just one, but couple of excellent knocks that we have witnessed in this run chase. Tension definitely in this camp. They were not hoping, they were not expecting that this will hit them the way Iftikhar and Mohammad Faizan splayed. And Marina Iqbal, sometimes as an opponent you can't do much but just stand there in the middle and admire what the other person is doing. Exactly. Faizan was given a chance, but after that he made sure that he grabbed this opportunity with both hands. And it's not easy. He was benched before, given this opportunity in a crucial match against a good opposition. Wide. Right, Awais Anwar into his last over. He's been the pick of the bowlers. Wicketless, but has given away only 17 runs. He's bowled with some venom, good pace. But yeah, given the opportunity, Faizan, how much he's capitalized on it. And it just makes me think, how can a player like his talent be on the bench for 4 games? Well, that's $1 million question, but now they'll be happy to pick Faizan in every 11, moving into the business end of the tournament. 150 already on board. Driven, beautiful shot. Right between the two fielders. You can do no wrong, Faizan, tonight. Nurpur Lions have no answers how to stop this guy. Faizan, steady base. It wasn't a bad delivery in particular, a wide Yorker, but look at that, the wrist coming into play. Square drive at its perfection. Just the attitude he has with his bat on his shoulders, because he knows that he's got the skill. He can hit you big whenever he wants. Can change in field, point comes in, mid wicket goes back. All these changes means they're under pressure. That's better. Good bowling. Now, one thing you have to be sure of is not to give room to Faizan to free his arms either towards offside. Now look at that, some beautifully crafted shots. He can power them, he can muscle them. Coming down the track, slog sweep coming into play. He has a huge range of shots into the zone, and look at that, just the jab. That's how much power. That was probably the shot of the tournament so far for me. Definitely deserved a standing applaud. Oh, that's picked up beautifully again. It's Saad this time. Wow, they keep coming at you, these Markhor boys. Another 6 to them.
Well, Saad, he put out a statement. If Faizan can do it, if Iftikhar can do it, so can I. Again, look at that steady base. Wasn't a bad delivery. I still have to feel for Awais. But what a shot. They stand and deliver, playing through the line. Beautiful. There's a chance. No, not hit, not throwing. It is, as I said, you just can't, sometimes you just can't help it. Just watch others do whatever they want to do, and that's the sort of inning UMT Markhors have played. Iftikhar Ahmed 66 of 31. I think that really set up the chase. And then it was Faizan taking the lead from him. Now Saad joining in. Yeah, it's really important for someone like Faizan to have a word with Saad. Just give him sort of confidence and belief that you can also do it. And we're going to win this game. Oh, inside edge. Well done. Rohil Nazir, the wicketkeeper, diving around. Is it too late? Well, I guess. Cricket is a funny game, you never know. But Faizan and Saad, the way they're batting in the middle, doesn't look that there's any threat at all to this pair. You can't tell who's more tensed. Poker face both ways. He's relaxed, nice and smiley, as he always been. Nice is the man, he says. Pulled. Looking for couple. No, not getting. But at the moment, singles and doubles would do for them. 17 done, 163 for 4. .25 needed of 18, and that's how the match has been so far. Nurpur Lions batting first, 187 for 7. Amir Yamin top scoring with 39. Nisar getting a couple. Akif also getting 2 wickets, and in Ranches 163 for 4. Slower one. I think that's where they've missed out. There've not been enough slower ones into the pitch by the line bowlers. They've been trying to bowl quick, fiery deliveries, which has worked in the favor of UMT Markhors. Especially to Iftikhar, I think they've bowled to his strengths. And most importantly, he made sure that he capitalized on it, and even for Faizan as well. But for Shahid, you don't want to be too predictable. He's bowling into the surface, that's a good option. And again, slower one is working on the surface. They haven't used it whenever required. They've been bowling those quick deliveries, fiery deliveries, looking to beat the batters by pace. That has not happened for them. Faizan straight away having a word with Saad, probably just telling him to wait for it, stay in the crease, keep your eyes on the ball and wait for that delivery. So I would hope that Shahid now will back himself with his top ball. Slight adjustment in the field. They're sending 45 back to the boundary. Third inside the circle. Fine leg been pushed back. Mid off up. Shahid. That's better. That's good bowling. Very good bowling. Smart bowling. But is it too late? Time will tell. This has been good entertainment for the crowd. Early on, Iftikhar putting up fireworks, and then Faizan followed it. Still there, they're being entertained thoroughly. 23 needed of 15 deliveries
Faizan, we have to talk about him. What a knock he's played so far. He would love to take his team home. Slaughter one again. Finally, he's learning which space to ball on this surface. Shahid. They're learning, finally they're learning how to ball this surface, and what we have learned is that Barrier Town has gone global. Barrier Town Properties are developing a world-class gated community in Dubai South. Nice. And Mr. Afridi, the umpire, is having a word with the bowler, maybe running on the in that danger area. That's what he wants him to avoid. Credit has to be given to all these people who've stood around, because the games have been excellent, both the games. Oh, he's played up in the air. Khush Dil under. Who takes it? Is there a twist in the tail? It's Saad who has to go back. Brilliant bowling from Shahid Aziz. Into the surface for first 4 deliveries, and this one right in the block hole. Saad was probably ready off the back foot, expecting another slow bouncer. Just slammed it hard, straight up in the air. The weight was on the back foot. And a good take by Khushdil Shah. Well, Saad had a short outing there, scored 9 of 8, and UMT Markhors are 5 down on 166. They keep coming for UMT Markhors. They've got so many power hitters in their side. Comes another one, Abdul Samad. He's a bit of a destructor. 156 runs, 122 the strike rate. Slower one again. Good bowling, good smart over from Shahid. Just 4 runs coming off it and a wicket off Saad Masood. 18 done, 167 for 5. In the morning game, it was the same situation. Ebil Stallions needed 21 runs of 12 deliveries. Here, UMT Markhors need 21 of 12 deliveries. Ebil Stallions did it in some style. Risty, just one. Can UMT Markhor do it? Musa with penultimate over. This one is going to be very crucial in the context of the game. Musa with experience. He should have a clear plan with Imam. Faizan is on strike. And we have seen what he can do. He cannot afford to lose boundaries here. Again, into the surface. This is good bowling. I wonder why they're bowling these deliveries early on. Yeah, certainly they've started bowling these into the pitch slower ones. Well, that's how Saad Masood got out. Again, as you said, he was expecting another slower one. He mixed it up with that quick delivery. He was late on the shot, and that's why he just ballooned up in the air. And they finally got
19, 10 deliveries. He's picked that one straight to the fielder. Just one more. This is good battle, good bowling now from Lions. Yeah, that's exactly what they need to do. Just contain the boundaries. So far, so good from Musa. And good captaincy from Imam as well. Now Fizan back on strike. They'll be itching to get the boundary going. Last boundary was 12 deliveries ago. They need one here. They've got long on, long off, deep cover, deep mid wicket. Would be looking something outside off stump to put away. Oh, brilliant. Good pace by Musa. They're mixing it up right at the end. Another dot delivery. They're like gold at the moment. Yeah, Fizan was eyeing that spot behind square towards the offside, trying to create that room. But it's not easy to put Musa away for those. Look at that opening up. Anything towards that short third. If he had connection, it would have travelled. But good from Musa. Now then, they need boundary. They're in dire need of it. Big tough fielder there. And it's gone over the head of him. The boundary they needed, they got one. Sigh of relief in the camp. They know probably now they're in much more comfortable position after the 6. Musa just dropping it slightly short. Fizan was deep in the crease. Look how deep he is, waiting for that length. And by ease, he put it away. A lot of bottom hand coming into play. For a moment, the long on thought he's in business, but no. That's the boundary they were looking for. 12 now needed of 7. Musa would like to close it without conceding another boundary. What a good shot that was. Great strike by Fizan. Read him well. Last ball from Musa. Again heaved away towards onside. 1. Are they looking for 2? No, not getting. Keeping the strike to himself, Fizan. 11 needed of last over. 19 done. 177 for 5. It doesn't get any closer than this. 11 runs required of 6 deliveries. The responsibility is on Shahid's young shoulder. Can he defend these 11 runs? It's a big moment in his career, in his learning curve for him. Marina Iqbal is on her feet. She can't see this. Which side this is going? Please tell us. Well, Shahid, he bowled well the previous one. Doesn't need to think a lot. He was doing good, whatever he was doing, just bowling into the surface. Just be aware and not become predictable. Here we go. Right, 11 of 6. Into the pitch, slower one, wide called. Oh no, what a moment. They didn't like it. The fielding side, and rightly so maybe. That's a crucial wide given by Mr. Afridi. The idea was right, into the surface. But just too wide off the off stump. Well, now he'll have to bowl that again. Oh, he's picked the fielder. Fielder, oh, that's a brilliant catch. Oh, that's brilliant. That's Khushdil Shah for you. They may have dropped many, but they've taken a blinder. Much needed. What a time to get one. Brilliant bowling from Shahid. He was forcing Fizan to go back, and he did. But what about Khushdil Shah? He dropped one earlier
and he was the same batter, Fizan. He dropped when he was on not. No problems there whatsoever. Shahid, with a brave heart, knew exactly what he was doing. Wanted to go towards the onside. For a moment he ran, and Khushdil made adjustment and crucially managed to take hold of it. Big wicket gone, 66. Brilliant from Fizan, but couldn't really finish the game. 6 down on 178. Faisal bhai, off stump. The pendulum swinging either ways on every over as Mohammad Nawaz walks in. 3,052 runs, enough experience of 257 games. But as I say, it's always a new day in cricket. You have to bring your A game every time when you play against the best. Yeah, this will be now interesting because Nawaz is a left-hander. Shahid Aziz was quite comfortable bowling to right-handers. And we all know Nawaz can go big. 10 runs required, 5 deliveries. Shahid to Nawaz, who hits it over the head. Oh, fantastic. What a shot. What a way to start your inning, over extra cover for 4. Yeah, that's what I was talking about. The angle was always going to be away from Nawaz. And this is a freebie for him. He can free his arms. The length was there from Shahid. Not a good delivery to bowl. Just opening up the front leg. And easy picking. Slammed it over extra cover for a boundary. That's inexperience from Shahid, still very young, new at this level. He will learn. 6 now required of 4 deliveries. Nawaz off to a fantastic start. Quicker one, pitching outside the leg stump. Dot ball. What a game. What an effort. Both teams refusing to give up. That is a brilliant comeback from Shahid. Brave enough to pitch it up rightly in the zone. Nawaz, anything shorter, he'll go into the offside. He can slam it into the leg side as well. They've got protection there. 2 men patrolling that boundary. 1 deep cover as well. Long on, long off in place. This is going to be a very crucial delivery. Shahid, Nawaz, he picks it up. He picks it up. There is a fielder. Who takes it? They're catching at the right time. Shazib, the fielder this time, is disappointed, dejected. Mohammad Nawaz, but he will have to go back. And they're catching brilliantly in the end. Shahid Aziz impressed us the other day, picking up 4 wickets, and yet again, crucial game, crucial over. And look at that. He's got a very steady head on his shoulder. Was brave enough again to pitch in the right area, and a good catching in the end. He is delighted, and he's delivering for his team. Nawaz, much was expected, gone on 4. 7 down now for UMT Markhors on 182. Four for 35 in 3.4 overs for Shahid. What a last over he is delivering for the team. 6 needed of 2 deliveries as Nisar Ahmed comes in. Oh, is it gone? No, there is a fielder, just 1 run. Oh my God. It has gone down to the wire, this game. Well, you have to give credit to Shahid Aziz and Imamul Haq for trusting him. He bowled a brilliant over,
into the surface, and this one picking up the wickets, crucial ones. Nawaz going aerial straight into the hands. And as you mentioned, they're catching it when it matters. 1 ball, 5 needed. Conversation going on. But what an entertainment it has been tonight. 5 to win, 4 of to get to super over. Wow, what a game of cricket. What a start to the second round. Both games going down to the wire. Crowd is just loving it. They're going nowhere. As the last delivery comes, 5 runs required. Abdul Samad to face the last delivery. He's picked this one. He's picked this one. For 6. Oh my God, he's won it for the team. That is a magnificent hit from Samad to win the game. He's become the hero for UMT Markhors. When it mattered, he's delivered and won the game. It doesn't get any closer than this. Such a magnificent game we have witnessed. All the hard work from Shahid Aziz. The last delivery just slightly in the zone for Samad. He was bowling brilliantly, though slow one into the surface, making life difficult for batters. But the last delivery, he missed out. But not UMT Markhors. You have to give credit to Samad for keeping a stable head, and he took his team over the line. But great entertainment tonight. You have to give credit to both the lineups for putting up a great show. Yeah, keep your head up. You played some quality cricket. Both sides will be proud of themselves. The way they have played in this game. And it was UMT Markhors keeping the cool in the end and winning the game by 3 wickets. Misbah-ul Haq is a relieved man. There are smiles all over now. It's over. It's gone towards UMT Markhors. What an effort by this youngster Abdul Samad. He was sent in late. But what a time to deliver. The last delivery, 5 needed, and he does this. Goes deep in the crease, heaves it over the long on for 6. He will remember this for the rest of his life. Brilliant scenes there. They're all delighted. Samad, probably the most important delivery he faced for his team was this one. But you have to give credit to Nurpur Lions, putting up a great show. Catching was brilliant by the end. And then bowling, in particular Awais and also Shahid Aziz, just couldn't really finish the game in their favour. And UMT Markhors finally winning by 3 wickets. Pursuit of 189 runs. They did it in some style on the very last delivery. And what a performance by Faizan and Iftikhar. Scored 66 each. It was supported by Nafi and Fakhr though. But it was mainly these two who chased on most of the runs. And Abdul Samad, for the best delivery that he has faced in his entire life, the most important one. And he's hit it for 6, just 9 runs. But those 9 runs are match-winning 9 runs. 189 in 20 overs. A valiant effort from Nurpur Lions. One for Amir Yamin, one for Khushdil Shah. But Shahid Anwar was brilliant, picking up 4 wickets. Just couldn't really finish the game in their favour. Awais Anwar, also critical overs from him, just giving away 31. Did not pick up a wicket, but I'd have to really give credit to all of them. Well, it's been a hell of a game tonight. In came the opening pair. Straight away runs were on offer, chances were put down. Early on, Hassan Nawaz was brilliant. Fakhar Zaman started off well, but this one, he nearly chopped it on. The boundaries kept on coming. And this one was the first to break, trying to slog it. Khushdil Shah was on the receiving end. Faizan was put down, but after that he put up a brilliant show. Some classic shots from him on offered. Runs were easily made.
Suhail with a brilliant run out. Did try to turn things up, but Iftikhar was in a whole different mood tonight. Came in, he covered his crease, and he took the attack back to the bowlers. Yeah, some fantastic hits from the master himself. Made it look so simple. Those long sixes, huge sixes. Iftikhar Ahmed all over the ground. And then this happened. This was a magnificent hit. Impressed us all. And after hitting the shot, he played one straight to the third fielder, who finally caught one, but it was Faizan on the other hand, learning from the best. Carried on, and this was a big wicket off Sarwar Afridi. At a crucial time, they kept coming back in this game, Nurpur Lions. That wristy, wow, that was shot of the tournament as per you, but the sixes that we saw in this inning was just brilliant, some sensational hitting. It was an effort like this which was required in the field in the end, kept the cool. Faizan on the other end kept hitting boundaries, kept hitting sixes for fun. Until this happened, this was a very crucial catch by Khoshdil Shah. Nawaz came and went. He had to go big. It's straight to the fan. And this delivery. Samad putting it away for a six to win the game for UMT Markhors in some style. Well, what a thrilling game we had tonight. UMT Markhors were put, actually they were bowling first. Nurpur Lions managed to put 187 courtesy to 39 not out from Amir Yamin, Imam and Hassan contributing with 20s. 2 for Nisar, 2 for Akif. But in reply, Iftikhar came in and he took the charge, scoring 66 of 31, and then Faizan, given a chance for the first time, scored 66 of 42 deliveries. But in the end, it was Samad with hitting that winning runs. Shahid picked up 4, 1 for Amir and 1 for Khoshdil. And UMT Markhors have registered yet another win by 3 wickets. Congratulations, UMT Markhors, you deserve this win. And with this win, let's have a look at what has happened at the points table. Allied Bank Stallions are at the top with 5 played and 4 wins. UMT Markhors with 4 wins are at number 2, same number of points. Nurpur Lions at number 3 with 4 points. Lake City Panthers, similar to Nurpur Lions, 3 losses with 4 points, and Anglo Dolphins without a win in this tournament so far. Right, we're going to take a short break. Once we come back, we'll have post-match presentation set for you.
Well, what a thrilling contest we've just witnessed on a chilly Rawalpindi evening in front of a great crowd. We saw an absolute humdinger. UMT Markhors getting over the line on the final delivery of the match. To the honors for the player of the match, I've got in the presentation party Mr. Mohammad Mubin, who is DGM Safari Projects, Barrier Town. Thank you very much for gracing the occasion. What a wonderful game. Like I said, both teams play their part. I'll start off with the losing captain, Imamul Haq, who will step forward and we'll have a little word. Hard luck, Imam. ऐसा गेम मैं क्या पूछूं, आप खुद ही बताइए. नहीं, आई गेस गुड फॉर द टूर्नामेंट. बहुत अच्छा गेम हुआ, दोनों टीम्स बहुत अच्छा खेली, बट इन दी एंड एक टीम को जो है हारना था और मेरे ख्याल से आज हमारी बारी थी हारने की. तो बट इट्स अ गुड गेम, मज़ा आया, मुझे खुद बहुत मज़ा आया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला. जब आप ऐसा गेम होता है काफ़ी आप इन्जॉय भी करते हैं और आप सीखते भी हो. तो एज अ कैप्टन मैंने भी बहुत सीखा और मेरे ख्याल से हमारी टीम ने इन्जॉय भी बहुत किया. और एज ए लीडर ये गेम जब एब्स एंड फ्लो होते हैं, मैच किसी डायरेक्शन जा रहा है फिर चेंज होती है, तो एज ए कैप्टन ये तो सेटिस्फाइंग ज़रूर होगा कि यू आर एबल टू फाइट बैक. जब भी टीम नीचे गई आपने फाइट किया राइट टिल द एंड. देखें, मेरे एज अ कैप्टन मेरी कोशिश यही होती है कि इन दी एंड आप अपनी टीम को लड़वाओ, वट एवर द रिजल्ट्स आर, वट एवर द सिचुएशन इज़. मेरी कोशिश है कि मेरे अंदर ये है कि मैं अपनी टीम से कहूँ, डिमांड यही करता हूँ कि यार एफर्ट करनी है टिल द लास्ट बॉल. और मेरे ख्याल से वो अल्हम्दुलिल्लाह हम राइट ट्रैक पे हैं. मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा उसने एंड पर बॉल किया, लेकिन क्रेडिट जाता है इफ्ती ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की और फिर भी हमने आउट करके उसके बाद सारी चीज़ें हो गई थी. लेकिन मेरे ख्याल से क्रेडिट देना चाहता है, उसने बड़ा अच्छा शॉट मारा आखिरी, लेकिन आई वाज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. जो प्रोफेशनल स्पोर्ट है, जितना मर्जी क्लोज गेम था लेकिन आप ड्राइंग बोर्ड पे जाएंगे और कहीं ना कहीं चीज़ों को असेस करेंगे जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हुई. देखें, बिल्कुल आप हारते भी हैं या जीतते भी हैं, लेकिन इन दी एंड आप सोचते हैं कि यार कुछ ना कुछ यहाँ पे हमारा जो ग्राफ था वो नीचे था. जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि हमने बड़ी अच्छी बैटिंग की, बीच में हम काफ़ी विकेट्स बीच में हमने खोए, लेकिन उसके बाद भी इट वाज अ वेरी गुड टोटल. मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छा टोटल है. हमने आज फील्डिंग जो है, जो हमारा स्टैंडर्ड था बड़ा अच्छा था, आज उस पर ज़रा डिसअपॉइंट हुआ. तो उस पर ज़रा कोशिश करेंगे कि किस तरह लड़कों को मोटिवेट कर सकते हैं कि यार टू डू समथिंग गुड इन फील्ड. चलें, आज का मैच आपकी टीम ने एंटरटेनमेंट में पूरा पार्ट प्ले किया. कंग्रेचुलेशन ऑन दैट. टफ लक और आगे के लिए ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर, थैंक यू. That was Imamul Haq. Moving on to the player of the match for his scintillating knock of 66 of just 31 deliveries, happens to be the captain of UMT Markhors. Our player of the match is Iftikhar Ahmed. He will collect a check of 25,000 rupees and a trophy from Mr. Mohammad Mubin. Chance to have a word with Iftikhar. पहले तो मैन ऑफ द मैच की मुबारक हो, जीत की मुबारक हो. बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ ओवरऑल. बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ और ऐसे मैचेस में मेरे ख्याल में मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ. हमने भी बहुत एंजॉय किया, लेकिन जब आप खेलने गए तो बड़ा टारगेट था. थोड़ा सा आप जो काफ़ी अर्ली ऑन चले गए थे, तो क्या सोच रहे थे अंदर के इस इनिंग्स को कैसे बिल्ड करना है? असल में सिंपल प्लान था कि मैं अटैक करूँगा, बस मतलब ऐसे विकेटों पे जहाँ पे थोड़ा मतलब बॉल नहीं आ रहा और आप वहाँ पे थोड़ा डिफेंस करते हो तो और भी मुश्किल हो जाता है. तो मेरे जहन में था कि मैं इस पे अटैक करूँगा, वही वो अटैक किया तो थोड़ा आसानी. और टूर्नामेंट में ज़ाहिर है एक हार आपकी टीम को मिली थी, तो उसके बाद अच्छा कम बैक किया. थोड़ा अगर वही जैसे मैंने इमाम से कहा, जब आप डिटेल में गेम का एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा बॉलिंग इनिंग्स में स्टार्ट जो है वो थोड़ा ऐसे कह सकते हैं कि स्लगिश था. बिल्कुल, जिस तरह की हमने स्टार्ट किया है बॉलिंग में तो मेरे ख्याल में वो सही स्टार्ट नहीं था, क्योंकि अगर आपके फास्ट बॉलर आपको जल्दी आउट ना दे और आपको थोड़ा जल्दी अर्ली ऑन ऐसे विकेटों पे विकेट ना दिलाए तो मेरे ख्याल में थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो इंशाल्लाह आगे के मैचेस में इस पे थोड़ा वर्क करेंगे. चलें, आज के लिए ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट आपकी टीम ने प्रोवाइड की और आपकी बैटिंग देख के भी बहुत मज़ा आया. बहुत मुबारक हो और ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट. थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू. Iftikhar Ahmed, ladies and gentlemen, the player of the match and also the captain of UMT Markhors. And that's all from down here. Thank you very much, Shah Faisal. Indeed, it was a thrilling end to this very exciting game that we've just witnessed. And this is how the game happened. Nurpur Lions winning the toss and deciding to bat first, posted 187. Amir Yamin top scoring with 39. Nisar getting couple. Akif also getting 2. And in reply, UMT Markhors chasing down this total on the very last delivery. Iftikhar chipping in with 66. Faizan also scoring 66. Shahid's 4 for 42. Quentin Wayne. Amir Yamin got 1. Khushil Shah also got 1. And in the end, UMT Markhors won the game by 3 wickets on the very last delivery.
Let's have a look at the points table of Barrier Town Champions T20 Cup. Allied Bank Stallions are on top. They've played 5, won 4 and lost 1, 8 points they've got. UMT are on the same 8 points with same number of wins. Nurpur Lions with 2 wins are on third with 4 points. Lake City Panthers also with 2 wins are on 4 points. Anglo Dolphins, they're last in the table, 4 games, and they've lost 4 of them without a point. Tomorrow, another exciting day at Barrier Town Champions Cup T20. It's Lake City Panthers will take on Anglo Dolphins. The match will start at 12 p.m. live from Rawalpindi Cricket Stadium. Do join us for that. Until then, it's goodbye. Cracking stroke. Wow. बोल्ड हो गए. ये बड़ा शॉट है आमिर यामीन और इस बार बाउंड्री को आसानी क्लियर करेंगे. बोल्ड हो गए. Well, this is some modern stuff for you. It's edged and it's dropped. And another one goes down. फुल शॉट खेला, कमाल किया. बेहद जोरदार अंदाज में 50 रन मुकम्मल किए कप्तान ने. फ्लैट बल्ले के साथ खेला और अपने शानदार 50 रन मुकम्मल किए फैजान ने. Oh, that's a brilliant catch. Oh, that's brilliant.